भारद्वाज, वेरी गुड, नाइस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारी ये 5 दिन की वर्कशॉप है, इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का नाम क्या है, आप बताएं। ये एक क्विज सेशन में आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि ऑन द एंड ऑफ सेशन हम एक क्विज रखने वाले हैं, उसमें इसी तरह की जो चीजें हैं आपके सामने आएंगी। तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कौन है वर्कशॉप, क्या बता सकते हैं? देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई कर रहा है। जस्ट आई एम वॉचिंग। रीना हुड्डा मैम, वाह जी वाह। विभांशु, बिग क्लैप टू मिस्टर विभांशु, जो शायद बीटेक के हमारे स्टूडेंट हैं। देखो ये छोटी छोटी बातें, इसी तरीके से लाइव आपका ये आप यूट्यूब का भी लिंक डाल दिया है हमारी टेक्निकल टीम ने। और देखिए हमारी जो टेक्निकल टीम है, जिसमें हमारे विकास जी और योगेश जी हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार इनके लिए बिग क्लैप करें कि इतनी एक व्यवस्थित व्यवस्था इन्होंने हमें दी है कि एक बार हम बोलते हैं तुरंत वो चीज ये इंप्लीमेंट करते हैं। बिग क्लैप एंड बिग सैल्यूट टू आवर टेक्निकल टीम, जिसमें स्पेशली विकास जी हैं, योगेश जी हैं और शिवानी मैम हैं। जो आप टेलीग्राम ग्रुप देख रहे हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हो, वो सारा जो है काम, जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो शिवानी मैम ने डिजाइन किया है। तो इन तीनों लोगों के लिए देखिए, हम लोग तो हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं, पर्दे के सामने वाले लोग हैं, लेकिन सच बताता हूं इन लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर योगेश जी, शिवानी मैम और विकास जी नहीं है, और इनके साथ ललित जी हैं, प्रदीप जी हैं, ये वो लोग हैं जिनसे आप लोग कभी रूबरू नहीं होंगे, लेकिन अगर हम आपसे संवाद कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वजह ये हमारी टेक्निकल टीम है। हेड्स ऑफ टू माई टेक्निकल टीम। और बिल्कुल सबसे पहला जवाब दिया था मिस्टर विभांशु ने, विभांशु को भी कांग्रेट्स। ये मैं नाम नोट कर रहा हूं आपका। ओके, और जो ओवरऑल कन्वीनर कौन है हमारे वर्कशॉप के, टेल मी द नेम ऑफ ओवरऑल कन्वीनर। ये हमारे अश्वनी जी हैं, जो एमसीए के स्टूडेंट है, सबसे पहला रिप्लाई किया है। वाओ, दैट्स नाइस। सविता शोरन मैम, जो रियली एक यूं समझिए इतने एनर्जेटिक हमारे चेयरपर्सन हैं, जिनसे हम बहुत मोटिवेट होते हैं। और सच बताता हूं, जब भी हम कोई इनोवेटिव प्लान मैडम के पास लेके जाते हैं, तो यूं समझिए कि उसके सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, उसका इतना अच्छा हमें रिवर्ट बैक फीडबैक मिलता है। तो मैडम के सामने कोई भी प्रपोजल लेके जाते हैं तो काम करने के पता ही नहीं लगता, कोई थकान नहीं होती। मैडम इस कदर हमारा साथ देती हैं। तो सविता मैम को भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि ईश्वर ने हमें इतने अच्छे चेयरपर्सन दिए हैं। चलिए, वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर कौन है? टेल मी द नेम ऑफ वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर। ये अश्वनी, वेरी गुड। देखो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और ये आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस चल रही है। एंड ऑफ सेशन पे हम इसी चीज को करने वाले हैं। चलिए, शाबाश। डॉक्टर सत्येंद्र बल गुप्ता जी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, और पूरा इसका जो कोऑर्डिनेशन है तो सर की वजह से ही है। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। अब मैं कल की बात करूं तो आप मुझे बताएंगे कि जो कल का सेशन था उसमें वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया था? देखते कितने लोगों को याद है। वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया था जी? इनॉग्रल सेरेमनी में वोट ऑफ थैंक्स किसने रिप्रेजेंट किया था? नहीं जी, विभांशु का जवाब आ रहा है, मयंक सर। उमेश कुमार कौन है जी? नहीं। वोट ऑफ थैंक्स किन्होंने बोला था? मयंक सर तो कल नहीं भाई। सर इनको थोड़ा क्लियर कर दो, 2 सेशन थे, इनॉग्रल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सर इनॉग्रल की बात कर रहे हैं। उमेश ने टेक्निकल सेशन का थैंक्स बोला था। हाँ जी, हाँ जी। ये सैल्यूट टू आवर डॉक्टर सत्येंद्र सर। देखो मजा आता है। देखो सर ने भी रिप्लाई किया है। सर सच में सबके जवाब एक तरफ, आपका जवाब एक तरफ। अजय सर अगर लाइव जुड़े हुए हैं तो ये अजय सर के लिए प्राउड की बात है कि डॉक्टर सत्येंद्र उनका नाम दे रहे हैं। सर सच में यही सर की सबसे बड़ी खूबी है कि इतने टैलेंटेड होने के बाद
मैं मानता हूं कि जिनकी बुक्स पढ़कर हम इस लेवल पर हैं और वो भी बच्चों की तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सर ये आपकी खूबी है कि आप बड़ों के साथ बड़े हैं और बच्चों के साथ बच्चे हैं। सर बहुत थैंक यू वेरी मच आपका, आपने भी जिस तरीके से पार्टिसिपेशन किया है, और आप तो आपकी वजह से ही ये समझिए कि अब और बच्चों में भी एक जागरूकता आएगी कि सर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तरीके से इस इंटरेक्शन जो क्विज है उसमें। अच्छा, कल का जो जब गैप था इनॉग्रल सेरेमनी के बाद, हमारे जो टेक्निकल स्पीकर ने आना था, तो हमने 4-5 मिनट का ब्रेक किया था। वो ब्रेक फिलअप करने का काम किन्होंने किया था? हाँ जी, जवाब दीजिए। अरे वाह वाह, आपने, आप खुद मैं देख पा रहा हूं। उमेश जी लिख रहे हैं, सुधीर, चलिए शाबाश। उमेश का बिल्कुल सही जवाब, सुधीर, यानी कि मैं बेटा खुद मैं ही हूं। और सच बताता हूं बच्चों, आप लोगों की वजह से हम हैं। हो सकता है एक टीचर, एक जो स्टूडेंट है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व जो है वो इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन मेरा निजी मत यह है कि एक जो टीचर है उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों की वजह से होता है। तो मैं, जिन्होंने जवाब दिया है, तो जो सबसे पहले जवाब उमेश ने दिया है, मैं उमेश को 2 लाइनें देता हूं सब बच्चों के लिए। यूं समझ लीजिए कि उमेश को डेडिकेट करते हुए मैं सब बच्चों को रिप्रेजेंट करते हुए कहना चाहता हूं कि तुम शब्द, आज हिंदी दिवस भी है, तब कहना चाहता हूं कि बच्चों, आप सब शब्द हिंदी के, मैं गणित का सवाल। 2 लाइनें प्रेजेंट कर रहा हूं, अच्छे लगे तो जरूर प्रतिक्रिया जरूर कीजिएगा। ओके, मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोग शब्द हिंदी के, मैं गणित का सवाल। आप सब बच्चे शब्द हिंदी के, मैं गणित का सवाल। मेरा हल एक है, मेरा हल एक है, आपके अर्थ हजार। तो बच्चों, आप लोगों के अर्थ हजार है हमारे लिए। तो सब बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं। उमेश कह रहे वाह वाह, आई जी रेवाड़ी नाइस, चलिए थैंक यू। तो क्योंकि मैं जनरली चेहरे देखे बिना बोलना मेरे बस की बात नहीं होती, तो आपकी ये प्रतिक्रियाएं जो चैट इसीलिए ओपन करवाया है, आपकी चैट मुझे बताएंगी मुझे कितनी देर बोलना और क्या बोलना है। क्योंकि बिना प्रतिक्रिया, बिना संवाद के बेटा रेडियो की तरह बोलना थोड़ा लिटिल बिट मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप साथ दे रहे हैं, तो मैं आज के जो क्विज का मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कल का जो टेक्निकल सेशन था वो किन्होंने डिलीवर किया था? उनका नाम बताएं। कल का जो टेक्निकल सेशन था वो किन्होंने, जो हमारे डिग्निटरीज गेस्ट थे, उनका नाम बताएं। यस, मिस्टर मुकुल भारद्वाज, बिल्कुल राइट। अच्छा, कोई, हाँ ये देखिए, अजय हैं, इन्होंने पूरा नाम भी बताया है, अभिषेक घुले सर। चलिए चलिए चलिए, अच्छा कोई मुझे बताएंगे कि, हालांकि ये तो आप लोगों को पता है, अजीत थैंक यू, कुलदीप थैंक यू, पूजा थैंक यू, अश्वनी, अजय, उमेश, पूजा, सपना, मुकुल, सब बच्चों को थैंक यू। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि जो हमारे टेक्निकल, जो कल मेन जिन्होंने टेक्निकल सेशन डिलीवर किया था, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं? बताएंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन का नेम? ये मुश्किल हो गया है, अब आपका ऐसे लेवल बढ़ेगा जी। हाँ जी हाँ जी, बताएं बताएं, वाइस पेटोटोस। अरे रीना मैम, आप तो बता ही देंगे। चलिए, पर रीना मैम ने काफी वेट करके रिप्लाई किया है, और रीना मैम ने कल एक मजबूत धागे की तरह हम सबको एक सूत्र में पिरोया इस वर्कशॉप के लिए। हेड्स ऑफ टू रीना मैम। और मैं चाहता हूं एक बार सब लोग रीना मैम के लिए भी क्लैप करें प्लीज, क्योंकि रीना मैम कल एक मजबूत सूत्रधार की तरह हमारे साथ थी, और उन्होंने सब लोगों को एक धागे में पिरोया ताकि जो कार्यक्रम है वो स्मूथनेस के साथ चले। बड़ा अच्छा लगा। एक बार फिर से मैं रीना मैम को थैंक यू बोलता हूं। अच्छा, और दूसरी बात मैं पूछता हूं, जो कल हमारे एमिनेंट स्पीकर प्रोफेसर आर के अग्रवाल जी थे, वो कहां से थे? वो विल टेल मी, काइंडली अलाउ मी टू रिप्लाई। ओके, ये मिस्टर अजय ने जवाब दिया, के यू कैन आई टी के यू, यस यस यस, वेरी नाइस।
देखो अभी आज हमने एक जनरल क्विज किया, आई थिंक आप लोगों ने इस चीज को एंटरटेन किया होगा। बेटा इसी तरीके से आप लोगों को हम एंड ऑफ द सेशन पे भी एक क्विज ऐसे ही कंडक्ट कराएंगे। जो सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा रिप्लाई करेंगे उनको एक अलग से अप्रिशिएशन लेटर हम इश्यू करेंगे, उसको अवार्ड दिया जाएगा मोस्ट अटेंटिव पार्टिसिपेंट। ठीक है जी। हालांकि इसकी जो चर्चा है मेरी अभी सविता मैम जी से नहीं हुई है, जो हमारे ओवरऑल कन्वेनर है, बट मुझे यकीन ही नहीं पूरा भरोसा है कि इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज को वो हमेशा सपोर्ट करती हैं। उनके सपोर्टिव नेचर के दम पर मैं आप लोगों से वादा कर पा रहा हूं कि हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि एंड ऑफ द सेशन हम एक क्विज करें और उसमें देखेंगे कि सबसे मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेट कौन था। चलिए अभी आप लोगों ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी सेशन को भी एंजॉय किया होगा। और चूंकि आज हिंदी दिवस है तो मैं आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये विडंबना है बच्चों, एक अजीब सी विडंबना है कि हिंदी दिवस के दिन जो हिंदी भाषी लोग हैं, हम हिंदी भाषी लोग ही हिंदी बोलने वालों को ही बोलते हैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो आज का मैसेज ग्लोबली स्प्रेड कीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, और इस चीज पे प्राउड फील कीजिए कि आप हिंदी के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो सबसे सरल और जो सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति देती है विचारों को, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी हिंदी भाषा होती है। तो मैंने कहीं समझा था, सुना था, मैं आप लोगों के साथ, देखिए हिंदी का एक जादू है, हिंदी में एक तिल्स्म है, एक मैजिक है। तो हिंदी का एक जादू मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। आर यू रेडी टू सी द मैजिक? अगर आप लोग रेडी हैं तो एक बार बताइए, सर वी आर रेडी टू वॉच द मैजिक ऑफ हिंदी। हाँ जी, कितने बच्चे तैयार हैं? क्योंकि बेटा मैं वैसे नहीं बोल सकता, मुझे लगे कि हाँ कोई है। अजय कह रहे हैं रेडी, एक हिंदी का जादू आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं मैं। उमेश कह रहे हैं, अजीत, राहुल, निहारिका, चिराग, चेतन, चलिए वेरी गुड, पूजा, बस बस इतने लोग तो मिल जाएंगे तो मुझे बहुत है। क्योंकि बस मेरे को ये लगना चाहिए कि हाँ मेरा संवाद मेरे बच्चों तक पहुंच रहा है, तभी बोलने का, कुछ कहने का फायदा है। अदरवाइज थोड़ा सा जी सर करो स्टार्ट। चलिए देखिए बच्चों, हिंदी का तिलिस्म देखना, इंग्लिश में ये जादू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इंग्लिश ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा पे खत्म होती है। ओके, यानी आपको फल फ्रूट खिलाकर शुरू कर दिया, लास्ट में आपको जानवर के साथ छोड़ दिया। लेकिन हिंदी जो है वो अनार से शुरू होती है और ज्ञानी पर खत्म होती है। यानी कि आपको फ्रूट्स के साथ इनिशिएटिव दिया और आपको नॉलेजफुल पर्सन बनाकर छोड़ा है। ये हिंदी का चमत्कार है। तो हिंदी का जादू देखने के लिए मैं 4 लाइनें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। इसमें एक शब्द है जो है पानी, एक शब्द है पानी। अब देखना चमत्कार क्या है कि जो शब्द बताया मैंने वो क्या बताया है? पानी, यानी वाटर। एक बार लिख दो यार पानी, ताकि मुझे लगे हाँ पानी, क्योंकि जब तक ये पानी शब्द नहीं समझेंगे, पानी, हाँ जी हाँ जी, चलिए पानी। तो ये जो पानी शब्द है, 4 लाइनें मैं बोलूंगा। पहली लाइन में पानी एक बार आएगा, दूसरी लाइन में पानी 2 बार आएगा, तीसरी लाइन में पानी 3 बार आएगा और चौथी लाइन पे पानी 4 बार आएगा। और हर बार लाइन का अर्थ बदल जाएगा। ये चमत्कार अगर मां शारदे ने किसी भाषा को बख्शा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंदी भाषा है। मैं जादू दिखाना चाहता हूं हिंदी भाषा का, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि, जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप आँखियों का पानी बोलने लगे। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप आँखियों का पानी बोलने लगे। और निकलो, एक लाइन हो गई है, पहली लाइन खत्म हो गई और आपने नोट किया होगा पहली लाइन में पानी एक बार ही आया, दूसरी लाइन में 2 बार आएगा, तीसरी में 3 बार, चौथी में 4 बार।
मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि जिन जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप आंखियों का पानी बोलने लगे, और निकलो समाज की भलाई के निमित्त जो सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त जो सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले जो पानी 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 बोलने लगे। देख ले जो पानी 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 बोलने लगे। और युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि शत्रु भी, और युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि शत्रु भी होके पानी 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 बोलने लगे। होके पानी 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 बोलने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हिंदी का जादू। कैसा लगा हिंदी का जादू? आपकी प्रतिक्रियाओं का, हाँ फैबुलस, पूजा कह रही है फैबुलस, और ये क्लैप कर रही है पूजा। अजय कह रहे हैं नाइस सर जी। चलिए, आप लोगों को ये हम प्रतिक्रियाएं करते रहेंगे तो मैं आपसे संवाद कर पाऊंगा। अश्वनी कह रहे हैं अति उत्तम। तो कहीं भी आज ये खुद से प्रण कीजिए कि जहां आगे सामने वाला आदमी हिंदी समझता है। बेहतरीन सर जी, रीना मैम का कमेंट सर आंखों पर। तो जहां पे अगर सामने वाला व्यक्ति हिंदी समझता है तो कोशिश करें हिंदी बोलें, और सामने वाला व्यक्ति अगर हिंदी नहीं समझता है तो आप उनकी जो भी भाषा है उसमें कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है एक वक्तव्य, जब आदरणीय विवेकानंद स्वामी जी अमेरिका गए, और जब वो एयरपोर्ट से नीचे उतरे तो कुछ अंग्रेज अधिकारी उनको वहां रिसीव करने गए। तो वहां पर जब उनको रिसीव करने गए तो अंग्रेज अधिकारियों ने पूछा कि हाउ वाज योर, उन्होंने पूछा हाउ आर यू। तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। तो अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि शायद वो इंग्लिश में जवाब देने में कंफर्ट नहीं है, तो हम, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में पूछे, जब इंडिया से आया है बंदा तो वो इंग्लिश बोलने में कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा है, तो हम इंग्लिश में नहीं पूछना है। तो उन्होंने हिंदी में पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी यात्रा कैसी रही। अंग्रेजों ने हिंदी में पूछा कि आपकी यात्रा कैसी रही, तो स्वामी जी ने जवाब दिया माय होल जर्नी वाज एंजॉयफुल। भाई मेरी पूरी यात्रा सुखद रही। उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया। अब अंग्रेजों के समझ में नहीं आया कि यार ये आदमी क्या है। हम जब हिंदी में प्रश्न पूछते हैं तो इंग्लिश में जवाब देते हैं, और जब इंग्लिश में जवाब प्रश्न करते हैं तो हिंदी में जवाब देते हैं। ये कारण क्या है? तो अंग्रेजों ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये क्या कारण है कि जब हम हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, और इंग्लिश में पूछते हैं तो हिंदी में जवाब दे रहे हैं। तो स्वामी जी का उत्तर अच्छा लगे तो प्रत्येक व्यक्ति ताली बजाकर मुझे सूचित करे। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जब शुरू में आपने पूछा हाउ आर यू, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाषा आपके देश में एक बातचीत का माध्यम होगी, लेकिन हमारे लिए भाषा को हमने मां का दर्जा दिया है। भाषा को हम हमने अपनी माता जैसा मानते हैं। तो जब आपने इंग्लिश में पूछा हाउ आर यू, तो यानी आपने अपनी मां का सम्मान किया। जब आप अपनी मां का सम्मान कर रहे तो मैं अपनी मां का सम्मान करूं। तो मैंने हिंदी में उत्तर दिया कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन जब आपने हिंदी में पूछा कि आपकी यात्रा कैसी रही, तो आपने मेरी मां का सम्मान किया, और अब बारी मेरी थी कि मैं भी आपकी मां का सम्मान करूं, इसलिए मैंने इंग्लिश में उत्तर दिया। ऐसे थे हमारे परोधा स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदी के मान सम्मान को सर्वोच्च रखा और एक शिखर तक लेकर गए हिंदी के सम्मान को। मैं बार बार प्रणाम करता हूं स्वामी जी के चरणों में, जो उन्होंने हिंदी भाषा को ये सम्मान दिलाया। अगर आपको स्वामी जी का जवाब अच्छा लगा हो तो तालियों से आप मुझे, जो सूचक तालियां होती है मैसेज में, वो आप संप्रेषित कर मुझे सूचित कर सकते हैं। चिराग कह रहे हैं तालियां बजा रहे हैं, शाबाश। विभांशु कह रहे हैं, और इनके बाद अश्वनी। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप एक्टिवली, उमेश लिख रहे क्लैपिंग। बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों कि आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज के इस हिंदी भाषा दिवस पे। वरना तो आज के दिन जो हिंदी की हालत है वो बहुत ही भयंकर हो गई है। मेरे तो एक बच्चे थे, वो बोल रहे कि वो टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि राधे श्याम बीमार हो गए, परिणाम स्वरूप मर गए।
उन्होंने कहा राधे श्याम बीमार हो गए, परिणाम स्वरूप मर गए। अब एक बच्चे थे हमारे अश्वनी जैसा, तो कहा सर एक बात समझ में नहीं आई, जब बीमार राधे श्याम हुआ है तो परिणाम स्वरूप क्यों मरा? राधे श्याम को ही मरना था। तो टीचर ने कहा, हिंदी के टीचर ने, अरे राधे श्याम बीमार हुए मतलब फल स्वरूप मर गए, लो एक और मार दिया, पहले परिणाम स्वरूप मारा, अब फल स्वरूप मार दिया आपने। तो आज के दिन हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इंग्लिश को मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन हिंदी जरूर आनी चाहिए, और इंग्लिश का ज्ञान दूसरे की कंफर्ट के हिसाब से आपको होना चाहिए। तो ये चीजें आवश्यक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो इंग्लिश भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि शादी में अब देखो जितना अंग्रेजों ने हमारा नहीं बिगाड़ा, जितना हमने अंग्रेजी का बिगाड़ा। वो शादी में भी एक आदमी कह रहे, जो परिवार के मुखिया थे, कि भाई लेडीजों ने खा लिया तो जेंट्सों को बुला लो। मतलब लेडीजों मतलब लेडीज नहीं होगा, लेडीजों, जेंट्सों। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सर क्वेश्चन पूछने की। बिल्कुल सही कहा पूजा ने। तो आज हिंदी दिवस भी है, और चूंकि शायद समय योगेश जी मुझे बताएंगे कि क्या स्थिति है अभी, क्योंकि उसी हिसाब से मैं कंटिन्यू रखूंगा बच्चों को। शायद हमारे टेक्निकल सेशन की टीम रेडी है अभी। और बच्चों आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। मेरी कोशिश थी कि आप लोग जुड़े इसमें, इसीलिए अश्वनी जैसे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। जी बिल्कुल सही। हाँ जी योगेश जी और अभी विकास। कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ मैम, थोड़ा सा मुझे टाइम का आइडिया दे देंगे कि फिर हम आपको और हाउ मच। बीच में बोल देंगे, अगर इफ यू डोंट माइंड आप कंटिन्यू रखिए प्लीज। हाँ नहीं नहीं, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं तो आपको सारी व्यवस्थाएं संभालनी मैम, इसमें मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी तो बच्चों से यूँ समझिए कि मेरा हमारा अस्तित्व बच्चों से, और कोई मौका इनसे रूबरू होने का मिलता है तो वो मेरे लिए सम्मान की बात है। सर हमारी टेक्निकल टीम ऑन वीडियो है, तो आप इनका इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। विकास जी योगेश जी दोनों साथ ही बैठे हैं इन द लैब, कंटिन्यूअसली दे आर वाचिंग। हाँ हाँ नहीं नहीं, बहुत जी जरूरी है। तो पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। आप जो ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमारी आदरणीय, बहुत ही मतलब क्या बोले, कभी लगता ही नहीं कि हमारे सीनियर हैं, इतना साथ रहती है हमारे, इतने प्यार से हम सबको सहेज के रखती है, आदरणीय डॉक्टर रीना हुड्डा मैम। इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप करें। मतलब स्ट्रेस रिलीजर है मैडम, हमारे ऊपर कोई भी स्ट्रेस होता है तो पीछे से आती है और एक विश्वास भरा हाथ हमारे कंधों पर रखती हैं और कहती हैं हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। तो आप हमारे लिए स्ट्रेस रिलीजर है मैम। और अब मैं बुलाना चाहता हूं कि हमारे जोड़ी से ही आए विकास, और ये हमारे आनंद मिलिंद है एक तरीके से, ये हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, जो जोड़ी से ही हम इनको बुलाते हैं। विकास जी और योगेश जी एक बार ऑन स्क्रीन आए प्लीज, एक बार ऑन स्क्रीन आए सर प्लीज। हमारे जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट इसका अभिन्न अंग है विकास जी और योगेश जी। सच बताता हूं, मैं तो जो हमारे लीफलेट बनते हैं ना, तो उन पर फॉर एनी क्वेरी के लिए हम अपना नंबर डाल जरूर देते हैं, लेकिन सिर्फ विकास और योगेश के दम पर, कि बच्चे कोई भी क्वेरी करेंगे तो हम बच्चों को होल्ड पे रख के इन्हीं से कॉल करते हैं कि विकास जी योगेश जी क्या स्टेटस है, बच्चों की एक क्वेरी आई है। तो फाइनली पूछते हम इनसे ही हैं, विकास जी और योगेश जी से। तो विकास जी और योगेश जी, हम तो यूं समझ लीजिए कि एक प्रेजेंटर हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो आप लोग प्रोवाइड करते हैं। कहाँ है, आए नहीं मैम विकास जी और योगेश जी? जी सर। अरे वाह 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 सर, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, इनके लिए भी जोरदार क्लैप कीजिए। हमारे बहुत ही एक तरीके से मजबूत साथी, जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और बच्चों, आपसे हम कोई भी वादा कर देते हैं ना कि हाँ ये काम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये दो लोग हैं जिनके दम पर हम आपसे वादा करते हैं। और जो लीफलेट पर नंबर दिया रहता है फॉर एनी क्वेरी, जो एनी क्वेरी लिखने का दम हमारे अंदर आता है, वो इन दोनों शख्सियत के दम पर ही आता है। और मैं तो इतना कोऑपरेटिव है, कई बार रात को 10-10 बजे फोन कर लेता हूँ, विकास जी योगेश जी, तो कभी ये नहीं कहते कि भाई सर कोई तो टाइम देख लिया करो।
लेकिन पूरा, और कल तो विकास जी ने योगेश जी ने बड़ी प्यारी बात की। मैंने कहा सर एक मैसेज मैंने भेजना है। ठीक है तो फिर मैं आपको अपना दूसरा नंबर देता हूँ। तो बहुत ही इन्होंने कहा कि एक नंबर मेरा ऐसा है जिस पर मैं कॉल उठाऊंगा ही उठाऊंगा। वो नंबर भी कल योगेश जी ने मेरे साथ साझा किया। तो जो अपनापन इन्होंने दिया है, विकास जी और योगेश जी से मिलता रहता है, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ सर। हैट्स ऑफ टू यू। चलिए थैंक यू सर। और अगर हमारे शिवानी मैम भी ऑनलाइन है तो प्लीज वो भी एक बार आए, क्योंकि बच्चों से रूबरू, क्योंकि जो फॉर्म है वेब, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है गूगल फॉर्म, वो मैम ने डिजाइन किया है। और सारी वर्कशॉप का जो फेसबुक है और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो शिवानी मैम ही देख रही हैं। अगर शायद किसी और व्यस्तता में व्यस्त नहीं है तो आ सकते हैं एक बार, मेरा आग्रह है। और अजय जी का नेटवर्क इश्यू रहता है, लेकिन अगर जुड़े हुए हैं तो वो भी आए तो मुझे अच्छा लगेगा। आई थिंक वो अभी है नहीं। हाँ चलिए, लेकिन व्हाट्सोएवर प्यारे बच्चों, मेरी फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है। कल 4-5 बच्चों ने मुझे भेजा है, जो मैंने एक निवेदन किया था आप लोगों से, सर ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है अभी करवा देते हैं जी, अभी करवा देंगे। जो शीतल जी का एक मैसेज आया है कि ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज जी, अभी शीतल यादव कह रही है तो कर देंगे। तो उस पर मेरा निवेदन यह है कि हम उस पर एनालिसिस करेंगे कि वर्कशॉप के दौरान सबसे बेहतरीन वर्क किसने किया है। आपने अपने नोट्स टाइप कुछ नोट किया हो कि भाई ये मेरी क्वेरीज हैं, ये इस तरीके से डील हुआ, तो जो भी आप उस पर एक्टिव रहने के लिए पेपर वर्क जो करते हो उसका एक फोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड करें। हमारी जो एक पैनल है वो रिव्यू करेगा, उसको भी एक एप्रिसिएशन लेटर हम इश्यू करेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दोनों चीजें देखिए, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे वही लोग क्विज में ज्यादा आंसर दे पाएंगे। इसलिए देख लीजिएगा अभी आप ये एप्रिसिएशन लेटर किसको मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारा तो सिर्फ प्रयास है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एमिनेंट स्पीकर्स को जोड़ा है, वाइस पेटेटो जैसी बिग ऑर्गेनाइजेशन जो आज के दिन एआई में एक रिमार्केबल वर्क काम कर रहा है, जो बिग डाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिमार्केबल वर्क कर रहा है, वहां से टेक्निकल एक्सपर्ट्स को आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सविता शौरान ने इनवाइट किया है। तो ये सब प्रयास बच्चों सफल तभी माने जाते हैं जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवली। ये नहीं कि ठीक है एक वर्कशॉप है बैठ गए बस म्यूट कर दिया, ना वीडियो ऑन है ना ऑडियो, ठीक है, और हम अपने पर्सनल कामों में जुटे हुए हैं बेटा। तो ये कहीं ना कहीं वर्कशॉप, क्योंकि देखो सर्टिफिकेट्स दैट डजंट वैल्यू। आज के दिन कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन आप मुझे बता दीजिए जो सिर्फ पेपर वर्क के ऊपर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता हो, कि आप अपने डॉक्यूमेंट वहां शो कर दें और आपको एज ए ट्रेनी या कोई भी किसी भी पोस्ट पे आपको ज्वाइन करा ले। हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेटा अपना इंडिविजुअल टेस्ट लेती है, इंटरव्यू लेती हैं, उसके बाद ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री है, ये जस्ट एक गेट पास है कि भाई आप इंटरव्यू देने के लिए अंदर बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो, बस उसका गेट पास है। अब जब सामने आपका इंटरव्यूअर बैठेगा और आप बैठेंगे तो वही काम आएगा जो आपके ब्रेन में है, इस ऊपर वाले फ्लोर पे क्या क्या रखा हुआ है। अगर वो खाली हुआ तो वो डिग्री, ये वर्कशॉप के सर्टिफिकेट्स, ये नल एंड वॉइड है, ये कोई काम नहीं आने के। लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज है, मुझे याद आता था हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें पढ़ाते थे कि एक बच्चा अपने पापा के साथ बाहर घूम रहा था तो एक बैलून बेचने वाला आया, गुब्बारे बेचने वाला आया। अब बच्चे ने कहा, वो थे हाइड्रोजन गैस वाले उड़ने वाले गुब्बारे, तो अब वो बिक नहीं रहे थे। तो बच्चों गुब्बारे बेचने वाले ने क्या किया, एक गुब्बारा तोड़ा और उसे हवा में छोड़ दिया। अब वो ऊपर गुब्बारा उड़ा तो बच्चे एकदम से ललचाए, अरे ये तो उड़ने वाले गुब्बारे हैं।
तो एक बच्चे ने अपने पापा से जिद की उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर कि पापा मुझे भी वैसा गुब्बारा दिलाओ एक। अब जब बच्चे ने जिद की तो उसके पापा ने बोला गुब्बारे वाले से कि जी इसको एक बैलून दे दीजिए। अब जो बैलून छोड़ा था हवा में वो रेड कलर का था। अब बैलून वाले ने ब्लू कलर का बच्चे को दिया। अब बच्चे ने सोचा कि यार ये तो ब्लू कलर है। बोले अंकल जो रेड उड़ा था वो तो रेड कलर का था, तो मुझे रेड कलर का ही दो ना। तो उस गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा ब्लू कलर वाला भी उड़ेगा। तो बच्चे ने उत्सुकता से पूछा अभी इस अश्वनी की तरह कि अच्छा ये ब्लैक कलर वाला भी उड़ेगा, ये येलो कलर वाला भी उड़ेगा, ऑरेंज कलर वाला भी उड़ेगा। तो बैलून वाले ने बड़ा शानदार जवाब दिया कि बेटा कलर की वजह से नहीं उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं इनके अंदर क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपकी अगर जॉब क्रिएट होती है तो वो आपकी डिग्री के बेस पर नहीं होनी है, वो तो एक गेट पास है। मैटर करता है आपके अंदर क्या है। जैसे बैलून के अंदर क्या है, अंदर ऐसी चीज है जो उसको उड़ा सकते तो उड़ेगा, और अगर अंदर उसके सिंपल ऑक्सीजन जो हमारे जो सिंपल हवा है तो वो नहीं उड़ेगा। तो आज ये वर्कशॉप इसीलिए कंडक्ट कराई गई है कि आपके अंदर ऐसी गैस भर दें कि आप भी आसमान में उड़ें और आपका जॉब क्रिएट हो, उसके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ये हमारा प्रयास है और इसी प्रयास के लिए एक बेहतरीन टेक्निकल टीम आप लोगों के साथ जोड़ी गई है। और मैं फिर से, अगर आप मैम का भी नंबर है आपके पास, रीना मैम का, मेरा भी नंबर होगा, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप वहां पर शेयर कर सकते हो ग्रुप में। आपकी हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन पूरा करने की भरसक प्रयास किया जाएगा। तो अभी तक तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि प्यारे बच्चों आप लोगों को इस तरह की कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। सभी लोग इस टेक्निकल सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे का लिंक भी मैं अभी शेयर करवा दूंगा। हमारे डॉक्टर शिवानी को बोलकर अभी जैसे मेरा वक्तव्य खत्म होता है और जो भी हमारे जो आज के गेस्ट हैं और जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं वो कर कर हम आज का टेक्निकल सेशन भी शुरू करने वाले हैं जल्दी। तो मैं इन बिटवीन रीना मैम से एक बात पूछना चाहूंगा, मैम अभी क्या सिचुएशन है? सर 11:15 पे दे सेट कि वो ज्वाइन करेंगे, तो ये टू आस्क मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभिषेक गुले जी ने ज्वाइन किया है तो काइंडली रेज योर हैंड, क्योंकि आपका नाम यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है अभी तक। टेक्निकल एक्सपर्ट जो हमारे हैं, टुडेज टेक्निकल एक्सपर्ट, if Mr. Abhishek Guleji joined, please inform us or raise your hand so that we can identify you from the list of the participant. अदरवाइज एक बार योगेश जी, विकास जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभिषेक जी से एक बार टेलीफोनिकली डिस्कशन कर लें कि क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम मैनेज करें। क्योंकि मैं ऐसा रहता है कि कोई ऐसी बात हो कि मैं कोई ऐसी बात स्टार्ट कर दूं जो टाइम कंज्यूमिंग हो, फिर बीच में छोड़ते वक्त थोड़ा सा मैं यूं सोचूंगा कि यार ये बात तो बच्चों के साथ शेयर कर ही लेते हैं। सुधीर जी, बात हो गई थी मैडम सविता की उनसे, तो जी वेरी क्विकली दे आर गोइंग टू ज्वाइन, तो आप प्लीज कंटिन्यू रखें एंड वी आर वाचिंग द लिस्ट। जैसे ही अभिषेक सर ज्वाइन करते हैं तो वी विल इन्फॉर्म यू। चलिए ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए प्यारे बच्चों, मैं जो आपको एक बार फिर से जो हिंदी का एक जादू दिखाया था वैसा एक जादू और है मेरे पास। एक जादू और है ऐसा ही, पानी वाला जादू दिखाया था ना, एक तार का जादू और है। तार शब्द सुना आपने, तार? तो अगर आप ये जैसा हिंदी का जादू था ऐसे एक तार शब्द का भी जादू है, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार मैसेज में लिख दीजिए तार, फिर आपको तार शब्द का जादू दिखाते हैं। वायर, हाँ जी वायर, वायर बिल्कुल, उमेश सही लिख रहे हैं, सिमरन तार लिख रही हैं। हाँ, वैसे तार लिखवाने का मेरा मकसद इतना है कि मेरे को एक बार ये आभास हो जाए कि मेरी बात मेरे बच्चों तक पहुंच रही है। आशीष पहल लिख रहे हैं तार, शाबाश। जतिन लिख रहे हैं तार, योगेश जी लिख रहे हैं तार। चलिए बेसिक शब्द तार याद रखना और चमत्कार वही है, जादू वही है। देखो कितनी प्यारी भाषा है हिंदी। देखो हिंदी में एक मैं आप
शायरी नहीं कहेंगे, इसे कविता कहेंगे, सिर्फ 2 लाइनों की कविता, और इतना खूबसूरत जादू आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। बहुत ही प्यारी 2 लाइनें हैं जिसमें हिंदी का जितना मतलब गागर में सागर भरने वाला काम। किसी ने कहा तुम आए तो बसंत, क्या लाइन बोली? तुम आए तो बसंत। अगली लाइन पर जादू देखना। पहली लाइन समझ में आई? क्या लिखा है, क्या बोला है? तुम आए तो बसंत। अगली लाइन प्रेजेंट करूं? अगली लाइन में जादू है, बस इतनी छोटी लाइन अगली भी। ये हिंदी का चमत्कार है। पहली लाइन में होता है कि तुम आए तो बसंत और तुम गए तो बसंत। अब ये हिंदी का जादू, मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आया। जिनको समझ में आया वो इसको एलिब्रेट करके लिख सकते हैं। सिमरन वर्मा कह रही है यस। सिमरन वर्मा, क्या समझ में आया? तुम आए तो बसंत, तुम गए तो बसंत। देखते हैं हु विल टेल मी। सच में ये हिंदी भाषा के लिए प्राउड की बात होगी अगर ये जिन जिन लोगों को समझ में आ गया होगा। तुम गए तो सब करण, करण क्या बेटा? तुम्हारे आने से बाहर। सिमरन वर्मा रेज हैंड कर रहे हैं। सिमरन बोलकर बताना चाहते हो? एक बार सिमरन को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, टेक्निकल टीम। गए तो सब खत्म, वाह जी वाह। चलिए चलिए, अच्छा नहीं सर नहीं, सिमरन को वैसे ही हैंड ऊपर था उसका, चलिए कोई नहीं। तुम आए तो सब अच्छा, तुम गए तो सब खत्म। या एग्जैक्टली, शाबाश, समझ में आया। तुम आए तो बसंत, बसंत मतलब मौसम, और तुम गए तो बस अंत। ये चमत्कार, ये मैजिक सिर्फ हिंदी भाषा में देखने को मिलता है, इसलिए मुझे हिंदी से बेहद प्यार है। बसंत लास्ट। हाँ जी, शीतल यादव लिख रही है, थैंक यू शीतल जी। अब तार का जादू दिखाता हूं, देखते हैं कितने लोग समझते हैं, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगे तो प्रतिक्रिया ही जरूर करना, बुरा लगे या अच्छा लगे। सच बताता हूं, अगर आज हमारे देश में कोई प्रॉब्लम है तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमने प्रतिक्रियाएं करना बंद कर दिया है। हम प्रतिक्रिया नहीं करते। आई थिंक अभिषेक जी जुड़ गए हैं, तो ये तार वाला जादू। अभिषेक गुले जी इज ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ जी। चलिए प्यारे बच्चों, वेलकम है अभिषेक सर का, और ये तार वाला मैजिक फिर दिखाएंगे। अभी मैं हैंड ओवर करता हूं हमारे आज की जो वर्कशॉप का कंट्रोलर रीना मैम को, कि आगे की कार्रवाई स्टार्ट करें मैम प्लीज। Yeah, thank you. Thanks to Dr. Sudhir for giving your valuable advice and suggestions and guidance to the student, and not even the student, to all of us. And students, we are going to start our session. This is the second day. So for a formal welcome and the formal start of our technical session for the second day, I would like to call our research scholar, Miss Preeti, for a formal welcome and introduction to the second session. Kirti beta, you can come here. Yeah, Jo. Good morning, everyone. It is my pleasure to welcome everyone. We all have gathered here to attend the second day of our workshop-cum-training program on disruptive technologies, blockchain, artificial intelligence, machine learning, and big data. A big warm welcome to all the speakers and delegates who took out their valuable time and joined us today. I welcome Mr. Abhishek Guleji, industry expert, Vice Potatoes, for joining us today for the valuable time. A big warm welcome to all the delegates, HOD of our department, Dr. Savita Shuran ma'am, Dr. Stinder Balgupta, Dr. Reena Hudda, Dr. Ajay, Dr. Sudhir, Ms. Shivani, Madam Pooja, Prashant sir, Jogendra sir, and our technical team, Yogesh sir, Vikas sir, Lalit sir, and Pradeep sir. Yesterday in the first session, we learned about disruptive technologies
innovative trends, and the technologies in deep learning. And in the second section, we learned about machine learning, the basic introduction of machine learning, algorithms of machine learning, programming language, and mathematical operations. And today we will continue further. His enthusiasm for the topic really showed through lecture and engaged us in learning. You made topic very easy. You made topic very understandable. Mr. Abhishek, sir, now we will start our technical session, and now I want to hand over to you, sir. Thank you very much. Over to you, sir. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Just give me 1 minute, we will start. Okay, sir. Is my screen visible to everyone? Yes, sir. Thank you. Yes, sir, it is visible. So, good afternoon, everyone, and let's start with the session. Yes, good morning, good afternoon. So, yesterday, just to revise everything, we saw what is machine learning, and specifically, we saw what are the different technologies we should learn and we should be knowing if you want to work in this field. So, हमने देखा कि we had Excel, we had SQL, then Tableau was there, मैथमेटिक्स एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था जो कि उसके अलावा मशीन लर्निंग कर ही नहीं सकते, मैथमेटिक्स वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स उसके रिलेटेड देखे थे और समझे थे कि बाकी सारी चीजें क्या होती है कलेक्टिवली डेटा को एनालाइज करने के लिए. आज हम लोग स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग के फीचर्स एंड मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं उनके एक अंडरस्टैंडिंग, कैसे वर्किंग होता है, कैसे सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से एक एल्गोरिथम क्रिएट किया जाता है मशीन लर्निंग में, वो सारी चीजें देखेंगे. तो हम लोग कल तक ये स्लाइड देख रहे थे. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर वन फीचर्स ऑफ मशीन लर्निंग. सो द concept is going to be like, we will be looking at the feature first, we'll be understanding what that feature is, then we will understand the algorithm related to that. Okay, so सबसे पहले हम लोग वो फीचर को समझेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग उसके रिलेटेड एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है. अगेन सब इजी टॉपिक्स है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर करके एल्गोरिदम्स क्रिएट किए गए हैं. तो इट विल बी अ वेरी फन लेक्चर टू अंडरस्टैंड. Let's start. First, we'll start with unsupervised learning. Again, I will maintain a whiteboard wherein I will draw and show you everything. Today, we will be writing code in Python as well. तो हम लोग देखेंगे पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग का कोड इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है एंड पाइथन क्यों इजी है ये आपको आज समझ में आएगा कि क्यों इजी है. एक्सेल में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जैसे जिसके कारण हमें पता चलेगा कि एल्गोरिदम्स का मैथमेटिक्स कैसे वर्क करता है बिहाइंड द सीन. तो हम लोग वो जानने की भी कोशिश करेंगे. So let's start with unsupervised learning first. So you can see a diagram here, right? There is an input, there is a brain which has been denoted as a model, and एक output हमें एक मिला है, correct? तो input अगर देखेंगे तो different types of fruits है, जैसे orange है, एक apple है, एक peanut है, right? And different उसके colors है, shapes है. उसको लेके हम लोग ने मॉडल को एक इनपुट दे दिया एंड हम लोग का आउटपुट क्या मिला. एप्पल्स जो है वो एक साथ रखे गए हैं, देन ऑरेंजेस जो है एक साथ रखे गए हैं एंड वो पीनट्स जो है एक साथ रखे गए हैं. या फिर एक्चुअली मेरे को वो ग्रीन कलर फ्रूट का नाम याद नहीं आ रहा ठीक से, बट वी विल डिनोट इट एज अ पीनट. तो ये तीन फ्रूट्स को साथ साथ रख दिया गया है. तो ये चीज कैसे हुई, करेक्ट? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है अभी हम लोग पहले वो जानेंगे और फिर ये डायग्राम के ऊपर वापस एक बार आएंगे. तो मशीन लर्निंग का सबसे पहला टाइप हम लोग बोल सकते हैं या फिर सबसे पहला फीचर ऑफ मशीन लर्निंग इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. यूएसएल से डिनोट करते हैं यूजुअली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हम लोग. नाउ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? कल हम लोग जब भी डेटा के बारे में समझ रहे थे तो वी डिवाइडेड द डेटा इनटू टू थिंग्स. फर्स्ट वन वाज फीचर्स and second one was, can anyone tell me what was the second one? Okay, avocado is the fruit. Okay, features, and what was the next term which we used, if anyone is
is able to remember. Pattern, components. Okay, I'm getting some answers. So the correct term is, we had features and we had labels, or someone said we had targets as well, right? This can also be called as targets. अभी अगर एप्पल का एग्जांपल लें, तो एप्पल के फीचर्स हम लोग ने कल वैसे भी देखे थे कि एप्पल के फीचर्स क्या है, उसका शेप है, करेक्ट, देन उसका कलर है, तो ये दोनों एप्पल के फीचर्स हैं, राइट। अभी एप्पल का लेबल क्या है? एप्पल का लेबल खुद एप्पल है, राइट। एप्पल इज अ लेबल ऑफ एन एप्पल। जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो भी एक चीज है, उसको अगर हम लोग कोई नाम देते हैं तो उसको बोलेंगे लेबल। ओके, अभी अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? यही चीज हम लोग को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगी कि अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक डेटा आया है तो मेरे को कौन सा एल्गोरिथम लगाना चाहिए। यही फीचर्स एंड लेबल्स को समझ के हम लोग बता कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है। नाउ इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग we don't have features, we don't have labels, okay, we only have features. Now when we don't have label, coming back to this diagram, my model is never going to understand that this specific fruit is an apple, this specific fruit is an orange. तो मॉडल लर्न कैसे करेगा? क्या करता है मॉडल, राइट? मॉडल प्रेडिक्ट कैसे करेगा? तो यूजिंग ओनली द फीचर्स, model is going to group the components together. Okay, model is not going to identify, model पहचानेगा नहीं कि एक एप्पल है, मॉडल पहचानेगा नहीं एक ऑरेंज है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उसको दिया ही नहीं गया है कि दिस शेप दिस कलर ऑफ फ्रूट इज एन एप्पल और दिस शेप दिस कलर ऑफ फ्रूट इज एन ऑरेंज। तो ये चीज मॉडल को पता ही नहीं है, तो वो खुद से कुछ लर्न कर ही नहीं पाएगा, करता ही नहीं है मॉडल, राइट। तो अगर हम लोग सिर्फ उसके फीचर्स दे रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स व्हाट कैन मॉडल डू? ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये समझो ये सारे एप्पल्स है यहाँ पे रखे हुए हैं, एंड साथ ही साथ मैंने ऑरेंजेस भी रख दिए थोड़े थोड़े, ओके। थोड़े शफल्ड वे में है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग के पास फीचर्स है, तो जो फीचर्स नजदीक है, जो दो पॉइंट्स के फीचर्स नजदीक है, जैसे मैंने इसको बोल दिया A1, A2, A3, एक एक एप्पल को A1, A2, A3, ऑरेंजेस को A1, O1, O2, O3 अगर मैंने नेम दे दिया, तो जो नजदीक वाले फीचर्स मैच कर रहे हैं उसके हिसाब से ग्रुप्स बनाए जाएंगे। ओके, तो इसका जो आउटपुट है मॉडल कैसे देगा? मॉडल देगा हमारे पास एक सारे ग्रुप में एप्पल्स होंगे, 4 एप्पल्स होंगे, एंड एक सारे ग्रुप में ऑरेंजेस होंगे, दैट्स इट। मॉडल को पता नहीं होगा कि ये एक एप्पल है एक ऑरेंज है, बस मॉडल को इतना पता है कि ये दोनों के फीचर्स एक जैसे है, तो इनका एक ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। ओके, जैसे हम लोग के डिपार्टमेंट वाइज भी अगर सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनका एक क्लास होता है, राइट। तो वो स्टूडेंट्स तो सारे स्टूडेंट्स है, कॉलेज में सीखने वाले सारे स्टूडेंट्स हैं, बट उनके बीच में कॉमन क्या है? उनके जो सब्जेक्ट्स है या फिर डिपार्टमेंट है, वो सारी चीजें कॉमन है, तो उसके रिलेटेड उनका एक क्लासरूम क्रिएट किया जाता है। या फिर जैसे सिमिलरली अगर हम लोग मैकेनिकल का देखें, इलेक्ट्रिकल का देखें, इनका एक एक क्लासरूम जो उनके कॉमन सब्जेक्ट्स है, कॉमन डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से क्लासरूम्स क्रिएट किए जाते हैं, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी की जाती है कि हमको नाम नहीं पता है फ्रूट का, लेबल, वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द लेबल, वी ओनली हैव नॉलेज अबाउट द फीचर्स। तो उसको यूज करके हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स का। इस पूरे ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग। When we don't know what is label, we only have features and we try to group those features, this operation is called as clustering. हम लोग ये clustering के बारे में अभी थोड़ा और पढ़ेंगे कि clustering कैसे किया जाता है। ओके, तो ये चीज समझ आ गई कि लेबल्स का नॉलेज नहीं है, सिर्फ फीचर्स को लेके वी आर जस्ट ग्रुपिंग देम टुगेदर बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। ओके,
अभी देखो, अगर स्पेसिफिकली और डीप में अगर हम लोग जाके समझे कि कलर स्पेसिफिक के बारे में, कि कलर जो वैल्यूज है, कलर के वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 255, राइट? जहाँ पे 0 इज ब्लैक कलर एंड 255 इज व्हाइट कलर, और उसके रेंज में सारे कलर्स आ सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे करूं कि मेरा जो रेड है, रेड का वैल्यूज इज समवेयर अराउंड 50, ओके, एंड ऑरेंज इज समवेयर अराउंड 120। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल गेस हियर कि मेरा जो रेड वैल्यू है, रेड कलर का वैल्यू है 0 to 225 के बीच में, 50 के आसपास कुछ वैल्यू आता है, एंड ऑरेंज का 120 के आसपास कुछ वैल्यूज आता है। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर जो है उसको नंबर्स में चेंज कर रहे हैं ताकि मॉडल को समझा पाए। रेड इज बीन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिट 50 एंड ऑरेंज इज कन्वर्टेड इनटू डिजिट 120। ओके, अभी शेप क्या है, हम लोग एप्पल का एक शेप देख सकते हैं। जैसे समझो हम लोग ने बोल दिया एप्पल का जो स्पेसिफिक शेप है उसको मैंने नंबर दे दिया 0, ओके, एंड ऑरेंज का जो शेप है, जो प्रॉपर सर्कुलर शेप है, उसको मैंने नंबर दे दिया 1, ओके। अभी मेरा मशीन लर्निंग मॉडल कैसे करेगा, डेटा कैसे जनरेट होगा? ठीक है, डेटा में सबसे पहले क्या होगा, एक कलर होगा, राइट, एंड शेप होगा, ओके। नाउ कलर, अगर वो एप्पल है तो उसका शेप में वैल्यू 0 रहेगा, एंड कलर में वैल्यू विल बी क्लोज टू 50। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट 50 बट क्लोज टू 50, लाइक वैल्यू कैन बी 52 हियर, ओके। अभी अगर ऑरेंज रहेगा तो शेप इज 1, वैल्यू इज समवेयर अराउंड 125। ऐसे ही सेम हमारे पास और वैल्यूज रहेंगे, बहुत सारे एप्पल्स है, राइट, तो बहुत सारे वैल्यूज रहेंगे सेम। अभी मॉडल कैसे ग्रुप करेगा, देख, what will model do, model will take two references because we have two fruits, it will take two references, okay। अभी two references ही क्यों, वो भी हम लोग ही बताएंगे मॉडल को कि you have to take two references, या फिर two groups create करने हैं, 3 groups create करने हैं। तो मॉडल क्या करेगा, मॉडल will check which are the points which is having smallest distance between the two, okay, smallest distance between the two। तो डिस्टेंस सबसे कम कौन से पॉइंट्स का है, एक ये नजदीक है, ये नजदीक है, एंड ये नजदीक है, राइट। नेक्स्ट ये वाला एक नजदीक है एंड ये वाला एक नजदीक है, ओके। तो व्हाट विल मॉडल डू, मॉडल विल ग्रुप 125,1 and 130,1 in one group because the distance is less, it is only calculating the distance, okay, that's it। and it will group 50, 52, 48 and 56 in one group। ये 3 का एक ग्रुप बन जाएगा एंड ये दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा। अभी वो ग्रुप्स कैसे बनेंगे, राइट, तो वो कैसे होता है कि सबसे पहले हम लोग 2 रेफरेंस पॉइंट्स लेंगे रैंडमली, कौन से भी रैंडम वैल्यू चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू लिया 125, सेकंड वैल्यू लिया समझो 56, ठीक है। अभी ये फर्स्ट ग्रुप का वैल्यू है अज्यूम्ड वैल्यू, ये सेकंड ग्रुप का अज्यूम्ड वैल्यू है, राइट। अभी क्या होगा पता है, ये जो 52 वैल्यू है इसका भी डिफरेंस विद 125 कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, एंड 56 विद रिस्पेक्ट टू 52 का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा। अभी दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंस इज लेस, 56 और 52 का लेस है, तो ये जो 52 है विल बी इन द ग्रुप ऑफ 56 बिकॉज उसका डिफरेंस का जो डिस्टेंस है या फिर डिफरेंस है वो कम है, इसके वजह से उसमें ग्रुप किया जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग का क्या था, प्रॉब्लम था वी हैव टू ग्रुप ऑरेंज एंड एप्पल्स, वी कन्वर्टेड दैट प्रॉब्लम इनटू नंबर्स, और वो प्रॉब्लम हम लोग ने ग्रुप किया यूजिंग जस्ट डिफरेंस टेक्निक, दैट्स इट। मैथमेटिक्स का सिर्फ डिफरेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे हुआ यूज, एंड ये एल्गोरिदम या फिर ये जो टेक्निक है क्लस्टरिंग वाली वो सॉल्व हुई, ओके। अभी यही चीज हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे कि मॉडल क्या कर रहा है, हमारा जो मशीन लर्निंग वाला मॉडल बनेगा वो मशीन लर्निंग वाला मॉडल क्या कराएगा। So machine learning model is going to only calculate that difference. It is going to convert this values into numbers, जो इमेज है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, नंबर्स के साथ वो डिफरेंस वाला जो मैथमेटिक्स है वो अप्लाई करेगा, एंड जिसका भी डिस्टेंस कम है या फिर वैल्यू लेस है उनको साथ में ग्रुप कर देगा। यहाँ पे मॉडल को वो एप्पल है वो ऑरेंज है इसका कोई भी नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ पता है कि जो फीचर्स है वो फीचर्स को यूज करके मुझे ग्रुप करना है, दैट्स इट।
तो ये होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में बहुत सारे और एल्गोरिदम्स होते हैं, बट दिस इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें हम लोग क्लस्टरिंग यूज करते हैं. ओके, अभी क्लस्टरिंग का हम लोग एक एल्गोरिदम समझेंगे, बट बिफोर दैट, इज दिस कंसेप्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लियर? जस्ट पुट yes or no in the chat box. Yeah, a priori algorithm is again a type of unsupervised learning. It is used for some different thing. Now we will be learning one algorithm related to this topic. Okay, so the name of the algorithm which we are going to learn is k-means cluster. This is a very easy algorithm. It works on the same principle which I have explained you right now. Okay, so see, what is k-means algorithm and how does it work? Okay, so first we'll understand k-means. What is k-means can be divided again into two parts. First is k, again the next one is means. What is the meaning of k here? k मतलब हम लोग को कितने ग्रुप्स बनाने हैं. अगर हम लोग को 2 ग्रुप्स बनाने हैं तो k is going to be 2. अगर हम लोग को 3 ग्रुप्स बनाने हैं, k is equal to 3. You can create as many number of groups as you want, but k should be always greater than 1. Okay, because common sense की अगर k का वैल्यू 1 होगा तो ऑलरेडी वो 1 है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर पूरा डेटा है, राइट? तो k should be always greater than 2. This k is also called as number of clusters. Okay, और we can say groups को ही clusters अगर बोलेंगे तो k is equal to number of clusters. अभी what is the meaning of means? For understanding means, just understand that we have to take mean in the sense we have to take the average value. Okay, now where to take the average value, that we will understand while we solve it in Excel. Okay, so I have a good example in Excel here, wherein I have some points. A1 to A10 are the points, and X and Y are the two coordinates which are been given. Now why X and Y coordinate has been given, we will understand that. Okay, this is a 2-dimensional data, right? Because if I want to plot this on a scatter plot, right? Or what is the meaning of scatter plot? First we'll understand that. So scatter plot is basically I have X and Y axis here. Okay, and based on X and Y coordinates, my points will be plotted here like this, right? In scattered way. तो इसको हम लोग बोलेंगे स्कैटर प्लॉट. ओके, अभी अगर इसका ये जो डेटा है, इसका अगर स्कैटर प्लॉट हम लोग रेडी करेंगे या फिर बनाने का कोशिश करेंगे तो स्कैटर प्लॉट विल लुक समथिंग लाइक दिस. सी, अगेन आई विल बी हैविंग X and Y axis. This is X axis, this is Y axis. Okay, suppose on X axis I take color and on Y axis I take shape. Okay, तो ये exactly मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट एक randomly कैसे ड्रॉ होगा देखो. सारे zeros के values Y पे है, in the sense Y equals to 0, तो सारे values यहाँ पे आ जाएंगे, X पे जो भी values है, correct? And जो भी values 1 पे है वो suppose यहाँ पे आ जाएंगे. Okay, now clustering कैसे? अगेन यहाँ पे डिस्टिंक्टली 2 क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, बट हम लोग करेंगे तभी कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा. ओके, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा. अगर यहाँ पे हम लोग ये जो डेटा है इसका स्कैटर प्लॉट करेंगे, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स, ये देखिए ये जो स्कैटर प्लॉट पहला ही स्लाइड है. दिस इज हाउ स्कैटर प्लॉट लुक्स लाइक. ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स का X and Y एक्सिस को लेके हम लोग ये स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है. ओके, अभी नेक्स्ट इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को बनाने हैं 2 ग्रुप्स. ओके, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, बट डेटा सिर्फ 10 पॉइंट्स का है, इसके कारण हम लोग बनाएंगे सिर्फ 2 ग्रुप्स, विच मीन्स 2 क्लस्टर्स. अभी k का वैल्यू 2 फिक्स हो गया, विच मीन्स माई k इज इक्वल टू 2. Okay, अभी मैं क्या करूंगा, सबसे फॉर फर्स्ट इटरेशन, अभी k मींस कैसे वर्क करता है वो समझेंगे. फॉर द फर्स्ट इटरेशन आई विल अज्यूम 2 रैंडम सेंटर्स.
of this group. For first group, जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखूं cluster 1 and cluster 2. Okay, I will just assume 2 random points. Okay, now see, अभी random points कैसे assume करेंगे? देखो, ये जो है C1, C2, यहाँ पे values है, right? Next, A3 और A8 randomly दो points मैंने assume कर दिए, which is A3, this one point, and A8. This is cluster 1 yellow color, cluster 2 is green color. So C1 और C2 के अंदर क्या आया? A3 for cluster 1 and A8. Okay, अगर ये सेंटर्स है क्लस्टर्स के तो वो ग्रुप के अंदर तो आ ही जाएंगे, राइट? अभी मेरे को क्या करना है? With respect to A3 and A8, I have to find out the value of distance from each and every point A1, A2, A4, A5, A6, A7, A9 and A10. Okay, तो अभी हम लोग ये कैसे करेंगे? कौन से डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोग चेक करेंगे पहले। तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे इजी जो टेक्निक है वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस। which is called as Euclidean distance. अभी Euclidean distance का फॉर्मूला क्या है? Euclidean distance is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay? ये जो फॉर्मूला है मैंने ये एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा चेंज किया है। K मीन्स का जो फॉर्मूला है एग्जाम्पल के रिलेटेड मैंने चेंज किया है। ओके, so this is the formula for Euclidean distance. Again, there are lots of distances which we can calculate. Second is squared Euclidean distance. We just have to take the square of this. Next is Manhattan distance. Okay, where we instead of taking the square, we take the absolute value. Okay, absolute in the sense even if the value is negative, we take it as positive. Okay, so as distance can never be negative, that is why square has been taken. Because if x1 is greater than x2, तो ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगा, राइट? तो उसको डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी कीप इट, वी टेक स्क्वायर सो दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर इन पॉजिटिव. Square Euclidean distance is basically just take the square of this, and Manhattan distance, as I said, we have to take the modulus, or we have to keep the value positive. Okay, so we'll be using Euclidean distance just to keep it simple. Coming back to Excel, just copy this. Yeah, paste it here, and now just remove it from here, because again, see, if I have assumed the centers, they are already been added, right? So no need to calculate the values. हम लोग को calculate नहीं करनी है. अभी मैं क्या करूँगा? Now what I will do, for with respect to A3 I will calculate the distance. With respect to A8 I will calculate the distance. Okay. With respect to A3 and A8 I will calculate the distance. Whichever distance is less, that is going to be the group of my new point. Okay. So how to calculate the distance is equals to x2, sorry, which is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, again, see the use of Excel, as we explained yesterday. Each and every algorithm which you do can be solved in Excel. Okay, now see this and this after, right? Now these are the values with respect to A3. Okay, similarly I'll calculate the values with respect to A8. I just have to change two things. This will come here, this will come here, this will go down, and this will go. Okay, yeah, correct. Percentage is for absolute address, or we are just fixing that specific cell. Okay, now if I track this down and if I remove these two values, now what I have to do, I have to check which is the minimum value, and that specific point will go in that cluster. Okay, this is for A3, this is for A8.
or specifically this is cluster 1, this is cluster 2. Okay. This is cluster 2. Now see, for A1, A8 the value is minimum, so A1 will go here. Similarly for A2, this value is minimum, A2 will go here. A4, this value is minimum, A4 will go here. A5, C1 is minimum, so A5 will go here. Similarly, A6, A6 will go here, minimum. Again, which is minimum? A7, A3 is minimum, A7 will go here. For A9, C2 is minimum, so A9 will come here and A10 will come here. Now see, based on the distances, whichever is minimum, I have just grouped this into two. This is one cluster and this is another cluster. C1 and C2. Okay. Is this point clear? Usually the values don't come out to be same, but if value comes out to be same, you can assign it to either of the two, because after this iteratively it will be calculating the distances and it will be fixing. Okay, so for now C1 and C2, how C1 cluster 1 and cluster 2 has been created, and how using the features. I did not had any labels here, right? For X and Y, A1, A2, A3, I did not had any labels. A1, A2, A3 is just the notation of the point. It is not the label. Okay. Using the formula of distances, I just grouped these two here, right? Is this clear to everyone? Okay. Now what we will do, see, we have understood it on the blackboard, on the whiteboard. Then we have understood it how it is been solved in Excel. Now we will understand and write the code for key image. Okay. Just give me 1 minute. I'll share a notebook. Yeah, key image. Just let me know if this is visible. The terminal or black colored screen of Jupyter Notebook. If you guys know this, if this is visible, just let me know. Okay, cool. Now, abhi 1 second. Let me show you the data set first. If you guys know, I am using the iris data set. Okay, just remove the labels from here. Now these are the 4 features. Okay, which we have. These are again values. What is iris data set? Iris data set is related to a flowers, different types of flowers. There are basically 3 types of flowers: Setosa, Virginica, and versicolor. So 3 flowers are there, and the measurement of length, measurement of sepal length, sepal width, length, petal width is been given to you guys. And these are the features of the flowers, right? And the thing which I deleted here, see, just give me 1 second. Yeah. This variety or the type of flower, I just deleted the labels because this data is generated for classification. We'll be using it for clustering. Okay. This is what is the measurement, and then there were labels which I deleted. Now, based on these features, we'll try to group. Now, how grouping works? First of all, what we will do, we'll import the data. Go here. Now, to manipulate any data set in Python, we have pandas. Pandas is the name of the library using which we can manipulate the data, or we can import the data, export the data, make some changes on the data. Okay. Now, if I want to import, I have to use the function called as pd.read_csv. I will write dataset, iris.csv. Okay. One more quiz or a short question to you guys. If you guys can, if you guys can search along the go. If you know this is also good. That is also good. What is the difference between absolute path and relative path? If you are a computer science student, you should know this. Okay. We'll just take a look at the data. In computer language, what is the meaning of absolute path and relative path? Okay. Now see this. Iris will not use this variety. Based on this 1, 2, 3, 4 values, we'll just try and create clustering. Okay. So I will just what I will do, I will just remove that variety. I'll take
data is equals to data.ilog. So ilog is the function using which we can sort the data, or we can just select particular data. Okay, now if I check my data, that variety is gone. Absolute path from the starting point, relative path from the current position. Exactly correct. Now you just have to tell me what is the meaning of starting point. From where does it start? So this is the data which we have. Next, I guess someone is raising hand. Okay. Root directory, correct. It will start from C drive. So what is the problem if you use absolute path? Next question. What is k-means now? Okay. Use k-means. We have library called as sklearn, using which we can, as I explained yesterday, in sklearn we have all the libraries of machine learning. Okay. So I'm just using that sklearn library and I'll write k-means, which is the name of the algorithm. Okay. So this is going to get imported. It will take, I guess, yeah, it will take some time. Now, first of all, I have to create an object. I'll write plus, which is just a variable name, k-means. And inside this, I have to mention number of clusters. So if I want 2 clusters, in this example, I will take 3 clusters. Now, why I will take 3 clusters? Because I know I had 3 flowers, Setosa, Virginic, and Versicolor. So I'll divide it into 3 clusters. Okay. Now I'll just fit the data. Cluster equals to, sorry, cluster dot fit. Okay, so at this position, you can see that all the operations which we performed in Excel of this distances and calculating all this is performed on the data and the grouping is done. Okay. Now what I will do, I'll predict the centers. I'll write pred is equals to cluster.predict. Now what I am predicting, I'm predicting how you have grouped it, what are the center points, or which point belongs to which cluster. That number I'm going to get. See, if I do this and if I check the value of ypred, see, if I execute this, 0, 1, and 2. Can you see the values here? These are the name of the cluster. Like 0, first cluster is given number as 0, second cluster is given number as 1, third cluster is given number as 2. So each and every point is been grouped into different clusters, 0, 1, and 2. As I said, 3 clusters, 0, 1, and 2 are the 3 clusters, and which point belongs to which cluster, that number has been given. Like first point belongs to 0, first cluster, which is 0. Last point belongs to second cluster, which is 1. This point belongs to third cluster, which is 2. Okay, so this is how k-means work. It is just using that formulas of distances and it is assigning the points to the clusters which we are trying to do. Now instead of 2, if I write, instead of 3, if I write 2 here, it is going to give me only zeros and ones. See, 1 and 0, which is 2 clusters. If I write 5, it will give me 5 clusters, 0 to 4. See, 0 to 4. So it is up to you how many number of clusters you want. Then again, there is a technique using which you can recognize this, how many number of clusters you want. But for this data, I knew that we had 3 points or 3 specific flowers, right? So I divided into 3. So we'll keep this to 3. Okay. These are the 3 points. This is how k-means is implemented in Python. Now you can see the level of simplicity Python provides to write code. I did not have to do any hardcore coding just because of this sklearn library, which already have k-means in it as an algorithm inbuilt. I'm just using it. Okay, so this is a library. sklearn is a library. Clusters and k-means. K-means can be called as a method of that specific library, using which I am using the k-means clustering algorithm to implement my concept. Okay, ये चीज clear हुई? Great. Now, this was unsupervised learning. Again,
there are lots of algorithms in unsupervised learning. We have linear regression, logistic regression, then we have PCA, LDA, then we have a priori algorithm, LCAT algorithm. Lots of algorithms are there. Okay, hierarchical clustering is there. Why did I choose K-means? K-means is the simplest of all and it is easy to implement. Okay, so looking at the time constraint, K-means was the algorithm जो कि हम लोग अच्छे से समझ के implement कर पाएंगे. Okay, now next we will be looking at supervised learning. Okay, now because you guys know what is unsupervised, what was the main drawback we can say in unsupervised, what was the main drawback of unsupervised कि हम लोग को नाम ही नहीं पता है कि ये एप्पल है ऑरेंज है, राइट? ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा सुपरवाइज्ड लर्निंग में. ओके, this is again one more type of machine learning we can say, or a feature of machine learning, which is supervised learning. This is where actual learning happens and we are trying to predict. Okay, now see this diagram. What is the meaning of this diagram? We'll understand that first. First of all, we have input data, okay, wherein we have provided images of an apple. Again, the features are going to be same, color, shape, and whatever we studied before. Now we are also giving annotations. What is this annotations? Annotations is the label. Okay, that the image कि जो image model को दिया जा रहा है वो image का नाम है apple. ओके, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मॉडल प्रेडिक्ट बना रहे हैं? हम लोग वो मॉडल बना रहे हैं जो प्रेडिक्ट करेगा वेदर इट इज एन एप्पल और नॉट. ओके, सिर्फ बताएगा कि ये एप्पल है कि नहीं है. ओके, जब भी नहीं है, समझो मैंने ऑरेंज का इमेज दिखाया और पूछा व्हाट इज दिस, तो तभी ये ऐसे नहीं बोलेगा कि ये ऑरेंज है. इट विल से इट इज नॉट एन एप्पल बिकॉज मॉडल ओनली नोज दैट वेदर इट कैन रिकॉग्नाइज एन एप्पल और नॉट. तो इफ अगर फीचर्स मैच हुए तो वो एप्पल को रिकॉग्नाइज करेगा. अगर दूसरे कोई फीचर्स मिले तो वो बोलेगा ये एप्पल नहीं है. वो ऐसे नहीं बोलेगा कि ये ऑरेंज है. करेक्ट, ट्रू और फॉल्स रिजल्ट. या इट इज अगेन अ डीप कंसेप्ट, ट्रू और फॉल्स. इफ यू आस्क, बाइनरी आंसर्स इज अगेन करेक्ट, which we can say only zeros and ones. If it is an apple, the value is 1. If it is not an apple, the value is 0. Okay, now this is my input data and this red colored apple over here below. Is my cursor visible to you guys? Beside this question mark के बाजू में जो एप्पल है, ये है एक टेस्टिंग डेटा, नया डेटा जो मॉडल को दिया जा रहा है. तो एप्पल के जगह पे मैं एक ऑरेंज भी रख सकता हूँ, मैं एक बनाना भी रख सकता हूँ, सिर्फ मॉडल को टेस्ट करने के लिए कि ये एप्पल है क्या नहीं. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एप्पल दिखाया गया है. सो द प्रेडिक्शन इज इट इज एन एप्पल. ओके, अगर मैंने ऑरेंज दिखाया तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज नॉट एन एप्पल. अभी ये चीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये चीज कैसे होती है एंड इसके इंपॉर्टेंट थोड़े पॉइंट्स क्या है वो समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. What is the meaning of classification? Classification is basically we are trying to classify between two things. Okay, अभी classification के दो types होते हैं. One second, let me come here. Classification के दो types होते हैं. Okay, classification can be done on classes and classification can be done on labels. Just 1 minute, okay? Just give me 1 minute. I don't know. Whiteboard is misbehaving. So there can be either classes or there can be labels. Now, what is the difference between the two? पहले तो मैं आपके बोल रहा था कि फीचर्स एंड लेबल्स ही हो सकते हैं, राइट? वो लेबल्स अलग है एंड ये लेबल्स अलग है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लासेस हम लोग कभी बोलेंगे व्हेन वी आर रिकॉग्नाइजिंग और व्हेन वी आर क्लासिफाइंग कैट्स एंड डॉग्स. जैसे दो अलग तरीके के एनिमल्स हैं कि कैट्स है और डॉग्स है, या फिर कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, जितने चाहिए उतने एनिमल्स हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो क्लास बेस्ड क्लासिफिकेशन है कि क्लास ही अलग है. लेबल क्या होता है? लेबल इज बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स. अभी डॉग्स के जो ब्रीड्स है वो मेरे को नहीं पता, बट हम लोग ऐसे बोलेंगे कि डॉग, टाइप ऑफ डॉग 1, डॉग 2, वो जर्मन शेफर्ड वगैरह जो होते हैं, पोमेरियन डॉग, वो सारी चीजें यहाँ पे. तो डॉग के अंदर ही आप क्लासिफाई कर रहे हो कौन से टाइप का डॉग है, उसको बोलेंगे लेबल बेस्ड क्लासिफिकेशन. ओके,
जब भी हम लोग क्लास बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, देन आवर मॉडल डज नॉट नो दैट विच टाइप ऑफ डॉग इट इज. डॉग है ये पता है, बट वो डॉग टाइप 1 है, डॉग टाइप 2 है, ये नहीं पता. सिमिलरली कैट है ये पता है, बट वो कौन सा कैट है ये नहीं पता. लेबल बेस्ड में क्या है, एक स्टेप फर्दर, डॉग है, क्लासिफाई कर लिया डॉग, अभी कौन से टाइप का डॉग है वो भी हमको चेक करना है कि विच टाइप ऑफ डॉग दिस इज. इज दिस क्लियर? क्लासिफिकेशन रिलेटेड हम लोग एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे. सुपरवाइज लर्निंग इज बेसिकली यू नो, सुपरवाइज इन द सेंस क्या, अभी जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो सुपरवाइजर होता है, राइट, एग्जाम को मॉनिटर करने के लिए. व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट सुपरवाइजर? वर्क ऑफ द सुपरवाइजर इज एवरीवन इज ऑनेस्टली राइटिंग द एग्जाम, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, राइट. हर किसी स्टूडेंट जो है उसका नाम, जो स्टूडेंट का नाम है वही स्टूडेंट आके एग्जाम दे रहा है. ऐसा नहीं कि कोई भी आके दे रहा है, आई कार्ड पे नाम अलग है, बंदा कुछ और आया है एग्जाम लिखने को, वैसे नहीं होता है. वो सारे सुपरवाइजर्स का काम होता है. यहाँ पे सुपरवाइजर कौन है? यहाँ पे सुपरवाइजर ह्यूमंस है. जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया ऑनेस्टी वाला कंसेप्ट की, अगर मैं एप्पल दे रहा हूँ तो मैं एज ए लेबल एप्पल ही पास करूंगा, ऑरेंज पास नहीं करूंगा, ठीक है. या फिर द पर्सन हु नोज विच इज व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज करेक्ट. ओके, अगर ये बता रहा है एप्पल को देख के एप्पल, सो वी आर द पर्सन हु इज डिसाइडिंग, ओके इसने बताया वो करेक्ट है, इसने बताया वो गलत है. अगर गलत है तो उसको हम लोग मॉडिफाई करके थोड़ा चेंजेस करेंगे. इफ इट इज राइट तो फिर मॉडल इज वर्किंग गुड. ओके, दैट इज द वर्क ऑफ सुपरवाइजर. यहाँ पे सुपरवाइजर का काम क्या है? सुपरवाइजर है, बट अगेन इट इज नॉट नीडेड, बिकॉज ये ग्रुप भी कर ले, बट ग्रुप कर लिया, चलो ठीक है, साथ में सबको ग्रुप करके रख दिया, बट एप्पल है यही नहीं पता है, राइट, उसको. तो सिर्फ बेस्ड ऑन फीचर्स वो ग्रुप कर दे रहे हैं बस. ओके, सुपरवाइज में अलग है, उसको रिकॉग्नाइज करना है. ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है. ग्रुपिंग इज स्पेसिफिक टू अनसुपरवाइज, क्लासिफिकेशन इज स्पेसिफिक टू सुपरवाइज. नाउ वी विल टेक अ लुक एट वन very good algorithm. You guys also know the name if you guys have learned which data structures and algorithms. We will be learning specific to that. The name of the algorithm is decision tree. I want you guys to tell me what is the meaning of tree, or what are the different components of a tree specific to computers. Okay, I'm not talking about the environmental tree. जो कंप्यूटर के ट्रीज है, ट्री बेस्ड जो हम लोग ने पढ़े थे और कंप्यूटर साइंस के बाद, वो ट्री का कंपोनेंट्स क्या होता है और कैसे चीजें वर्क करते हैं. रूट नोड, करेक्ट. और क्या होता है ट्रीज के अंदर? या चिल्ड्रन इन द सेंस चिल्ड्रन, चाइल्ड नोड वी कैन से. लेफ्ट चाइल्ड लीफ नोड्स इज देयर. लेफ्ट चाइल्ड, अगेन वी हैव राइट चाइल्ड. ओके, तो ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे यू गाइस ऑलरेडी नो कि एक रूट नोड होता है विच इज द फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री. देन कुछ ब्रांचेस होते हैं, राइट, लाइक दीज आर द 2 ब्रांचेस. देन नोड्स होते हैं, एंड अगेन दीज आर द 2 ब्रांचेस फॉर नोड्स. हियर स्पेसिफिकली आई एम क्रिएटिंग अ बाइनरी ट्री, in the sense only 2 branches are there. Okay, just to take simple example, I'm keeping this as a binary tree. Now how is this tree going to help us create a algorithm? You'll understand that now. Okay, again it is again easy. Before understanding tree, हम लोग एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं ताकि हम लोग को पता चले. वो डायग्राम समझने के बाद ये ट्री हम लोग आके बनाएंगे, ठीक है. यहाँ पे तो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. जस्ट गिव मी 1 minute. आई विल ड्रॉ द डायग्राम. इट विल टेक सम टाइम टू ड्रॉ. We will take a look at what is the meaning of decision here, how decisions are being taken, and how classification is done. We'll understand that. Okay.
The diagram might not look proper, but please bear me. Sorry for this. Now, अभी यहाँ पे मैं x और y के कुछ वैल्यूज डाल दूंगा, ठीक है? जैसे this is 0, okay, this is 10, 20, 30, 40 is there, 50 is there, 60 is there, and 70 is there. Again, and 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, and up one step. Okay. How is decision tree going to create? Okay. Now what we will do, on my x-axis I have x1, and on my y-axis I have x2. Okay. First condition which I will put, okay, in this diagram, the first condition is my values of x2 greater than 3. Okay, if I put this condition, which is x2 greater than 3, this is the threshold line which is going to be drawn here. Right now, whichever value are above, they are going to be greater than 3. Whichever values are low, they are going to be greater than 3. This is first split. Okay, side by side we'll draw a tree here so that you guys understand. Okay, so this is the first node of my tree. I have two conditions, which is one condition, which is x2 greater than 3. For this x2 greater than 3, I have two values, which is greater than and less than. For greater than, all the values above this red line, जो भी values red line के ऊपर है, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और जो भी values red line के नीचे है, यहाँ पे आ जाएंगे, right? जो less than वाला branch है वहाँ पे. यहाँ पे एक और condition में डालूंगा, यहाँ पे एक condition. ठीक है, अभी हम लोग स्पेसिफिकली ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला कंडीशन में हम लोग वर्क करेंगे. ये वाला कंडीशन इन द सेंस, ये पूरा ऊपर वाला कॉलम, ये जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले एरिया में आई विल पुट द कंडीशन ऑफ x1 इज लेस देन 30. तो 30 अगर डालूंगा तो ये वाला एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा. अब ये नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इज x2 ग्रेटर देन 3. तो x2 ग्रेटर देन 3 का जो भी रीजन है वहां पे मैंने डाल दिया कंडीशन इज x1 ग्रेटर देन 30. तो यहाँ पे जो नोड है यहाँ पे आएगा x1 ग्रेटर देन 30. ओके, इसके भी दो कंडीशंस बन जाएंगे अगेन, वन इज लेस देन, अदर वन इज ग्रेटर देन. ओके, बेस्ड ऑन दिस टू, लेस ग्रेटर देन वाले में सारा ये रीजन आ जाएगा, लेस देन वाले में सारा ये रीजन आ जाएगा. राइट नाउ ये हो गया एक चीज. ओके, यहाँ पे अगेन टू नोड्स आ जाएंगे. नाउ व्हाट आई विल डू, ये मेरा जो एरिया है उसको मैं कलर दे दूंगा. ठीक है, ये जो है देखो, अगर ये ऑरेंज कलर है, दिस इज ऑरेंज कलर्ड एरिया. तो ये जो एरिया था ग्रेटर देन वाला था, तो दिस नोड इज गोइंग टू बी ऑरेंज कलर, राइट? और ये है ग्रीन कलर वाला एरिया. So now this node is going to be orange color. Okay, we will divide our data into 4 types or 4 parts. ये हो गया ये साइड वाला कर्व. Now we will go on the less than portion, which is below the red colored line. अभी below this red colored line, I'll put the condition of x1 is less than 50, which is the line here. Okay. What is the condition? x1 less than 50. You can put greater than, less than, just your branches will change. Again, this is greater than sign, this is less than sign. This is the node, this is the node. Now, I'll just choose one color. This, okay. For greater than, these are all the values which I will be having. And for less than, these are all the values which I will be having. So less than is going to be this node, and greater than is going to be this. Okay, I don't want you to understand what is classification right now. You just have to understand how, where conditions are applied and how a tree has been generated. We just have to understand that. Okay, now to keep this simple, I have taken only binary trees. But when it comes to dynamic data, okay, it is said that we can only visualize or draw data in 2 dimensions, max to max 3 dimensions. 4 to 5 dimensions, we cannot draw it on computers. Or I cannot draw and show you 4-dimensional data and we can perform. So I've kept it to 2 dimensions so that it is easy to understand. आपको अच्छे से समझ आए. Now see, x2, x1, x1 ये conditions आ गए और उसके हिसाब से groupings आ गए, right? अभी अगर मेरे को कोई नया वैल्यू है, ठीक है,
what is the new value which I'm having? For new value, x1 is suppose 40 and x2 is suppose 1. ओके अभी ये जो नया डेटा है, वे यूजिंग दिस ट्री डेटा कैसे पास होगा हम लोग वो समझेंगे। क्या हम लोग को कौन सा ग्रुप है, ये जो नया डेटा है उसके लिए हम लोग को डिसाइड करना है वेदर इट इज अ ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और अ ब्लू कलर, इन विच रीजन इट इज लाइन। ओके तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो रेड, जस्ट चेक वंस अगेन इफ आई गेस योर आंसर इज नॉट करेक्ट। पास कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x2 का कंडीशन है ग्रेटर देन 3, अब हम लोग का x1 क्या है 1, तो ये वाले रीजन में आ जाएगा ना। नेक्स्ट कंडीशन इज फॉर x1 लेस देन 50, तो ये वाला रेड वाला रीजन है, लेस देन के लिए ब्लू वाला रीजन है, तो 40 आंसर है राइट। सो ये वाला पार्स होगा। अभी जो वैल्यू आया, जो भी लीफ नोड पे वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रुप ऑफ माई न्यू पॉइंट। सो माई न्यू पॉइंट इज गोइंग टू बी क्लासिफाइड एज अ ब्लू कलर्ड पॉइंट। पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जो डेटा था उसको कंडीशंस लगा के लर्न कर लिया, एंड नाउ व्हेन आई गॉट माय टेस्टिंग डेटा, जब नया डेटा आया वही जो ट्रेन किया हुआ ट्री था उसको यूज करके इसका लेबल हम लोग ने प्रेडिक्ट किया कि अगर मेरे फीचर्स है, जैसे x1 x2 फीचर्स है और ये जो कलर्स है ये हम लोग के लेबल्स है फॉर नाउ, ठीक है। तो अगर ये फीचर्स आ गए तो मेरा लेबल जो होगा वो ब्लू कलर वाला लेबल होगा। ओके this is how decision tree works. Again, every time the data is not going to look this simple, but समझने के लिए, इजी रखने के लिए ये था डेटा जो मैंने यहाँ पे रेडी किया था, ताकि आपको थ्रेशोल्ड्स कैसे लगते हैं, कंडीशंस कैसे लगते हैं वो समझ आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है कि पहले x1 ले कि x2 ले, ओके। तो उसके लिए एंट्रोपी का कंसेप्ट है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर x1 पहले आना चाहिए कि x2 पहले आना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन फर्स्ट आना चाहिए। यहाँ पे फॉर एक्सप्लेनिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई जस्ट रैंडमली टुक x2 and x1 and we did this. Okay, this is how decision tree has been using. There are few points which are important again here, which I would like to explain once more. ट्री का नोड जो है, this node of the tree, यहाँ पे हमेशा conditions होते हैं, okay, on the nodes, root node and we can say this intermediate nodes. Okay, ट्री का लेवल क्या होगा, डेप्थ क्या होगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो। यू कैन डिसाइड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ट्री। जो लीफ नोड्स है ये वाले, इनके ऊपर हमेशा लेबल्स होंगे, जो हम लोग के डेटा के लेबल्स है वो होंगे, और जो फीचर्स है, मेंशन द वैल्यू इन ग्राफ, मेंशन द वैल्यू इन ग्राफ। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, निधि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। ओके, जो लेबल्स है वो लीफ नोड के ऊपर होंगे, एंड ऑन द लीफ नोड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट प्रेडिक्शन ऑफ आवर वैल्यू। ये स्पेसिफिक फीचर के लिए करेक्ट प्रेडिक्शंस क्या है। ओके, इज दिस कंसेप्ट ऑफ डिसीजन ट्री एंड क्लियर हाउ क्लासिफिकेशन इज बीन डन। नाउ दिस रीजन्स, while explaining I made the regions on the go because of the conditions. Labels is, you will always get labels beforehand, before understanding you will get the labels. Okay, is this clear how decision tree works? This is just a example, yeah, of classification, how classification and decision tree. Now what is the condition? Basic concepts of programming. If condition has been used, if the condition is satisfied, if it is greater, smaller, based on that the branch has been selected. For that you should only know the concept of, simple mathematical concept of matching greater than and lesser than, and the concept of if condition. That's it. Only two things has been needed here. Now we will take one new data. I will show you the data and we will write the code of Python for this. Okay, just 1 second. I will show you the data first. Red data. So this data which I am showing right now is, see, there are lots of features here, right? I have purposely taken this data, and again I have quality. Now what is this data? First of all, we'll understand that this data is regarding to a specific kind of wine, okay, which is called as a red wine. In red wine there are different qualities of wines. Like if see, I will just open this
features for you guys so you guys can understand. These are all the metrics using which a wine is been evaluated. Okay, ये सारी चीजें वैल्यूज है, उसके हिसाब से वाइन का जो क्वालिटी है वो डिसाइड होता है कि क्वालिटी वाइन का क्वालिटी क्या है. तो शायद इसमें वैल्यूज आर फ्रॉम 1 to 9. ओके, तो 1 to 9 अगर है which means different अगेन ये कैटेगरिकल डेटा हो गया. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैटेगरिकल डेटा? ओके, categorical data is basically when I have discrete numbers or when I have letters. Okay, here see, when I wanted to convert labels of apple and orange, I converted using zeros and ones, or shape of circle and apple like shape, I converted using zeros and ones. Similarly, we have techniques using which we can change categorical data into numbers. Okay, using 0, 1 and 2. That's it. Now यहाँ पे ये this specific column is our dependent column जिसको हमको predict करना है. This is the labels कि अगर ये features है तो ये features का wine quality is 5 on a scale of 1 to 9. अगर ये features है तो इसका quality is 4, इसका quality is 7. Now these are all the features. Now see, one column is equal to 1 dimensions, which means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I have 11 columns, which means 11 dimensional data I have. Okay, so how can I solve this data on Excel, right? I will take this data and we will similarly, algorithm is going to create a decision tree like this. Now decision tree is not going to be of only 2 branches. There will be lots of branches, lots of nodes, not only 2 levels, it can be multiple levels. Okay, so we can also limit the number of depth we want. We will also check that how we can limit that, and we will be predicting the quality. Okay, now coming back to the code, this was the code for key means. We'll write the code for decision tree. I will just import the data first. Data is equals to pd dot. No, I will not take data. I will take pf is equals to pd dot read underscore. I changed the variable name because I had data first. Not exactly like switch case, but kind of switch case, you can say. Data set slash red wine dot csv. So this is the data. Let's take a look at the data. First, we already saw, but this is the data how it looks. Okay, so see, the data is in Excel file. Using pandas, I imported it in Python. Now I can manipulate or I can write code based on this data. Okay, now how we can write code, we'll take a look at that. One more thing. Coming back to this diagram, we have to divide our data into 2 parts. First one is training data. Second one is testing data. Now, what is the meaning of training? This input data, which is using which our algorithm learns, that is called as training data. This new data on which our model predicts is called as testing data. Okay. Now, see, I will just divide the data first. Okay, I will just using x and y. What is the meaning of x and y? I am just dividing the data into features first and labels. So all my features are going to be in x, all my labels are going to be in y. Now this x and y, again I am going to divide it into training set and testing set. Okay, I'll just first write so that you guys understand. See, x is equal to df dot ilog all rows and columns till -1, and y is going to be df dot ilog. So ilog is the function using which you can select specific rows. Okay, now if I check my x, see, till alcohol, till features I have selected, this quality is not included in x, which means all my features are there in x. Now I will check my y. My y is only going to be labels. See, 5, 5, 5, 6, 6, 6. So these are the values of quality which are there in labels or in y. Now this y and x, I am going to further divide it into training and testing. Again, there is a simple function using which you can do. I'll just copy paste it quickly. Train test split is the function, and I'll divide the data into train and test.
Now, as yesterday, if you guys can remember, Rajesh sir said that we should divide the data into 85 and 15% and 85%. I have taken 80 and 20 just to have more values in my testing. I have taken 80 and 20. I will execute this. Now, X-train, X-test, Y-train, Y-test. In X-train, I'll be having features that are going for training. In X-test, I'll be having features that are going for testing. In Y-train, I will be having labels which are going for training. Y-test is labels which are going for testing. Yes, 20% for test. So 20% value will go for testing and 80% will be used for training. Okay. Now, we will create decision tree. So to create decision tree, again, from sklearn.tree, import decision tree classifier. Okay. Now I will just create a I will just create object of this. dt is equals to, I'll just copy paste this. Now there are few parameters of decision tree. What are the parameters? While explaining, as I said, which variable will come first? Will x1 come first or x2 come first? For that, we will be calculating entropy, right? So for that parameter, you have to pass here, which is criterion is equals to entropy. Next, I have to limit the depth of my tree. So I will write max underscore depth is equals to, suppose, 10. I'll only take 10 levels. I will just execute. Okay. Now I will fit my data on training data, because on training I have to learn. So I'll write dt.fit xtrain, ytrain. Only the training data I will put. This is going to get executed. Now see, with criterion entropy and max depth, my decision tree has been created. Similar decision tree with many branches, many features will be created over here in this. Okay. Now I will predict on my new data. I'll write ypred is equals to dt.predict. Can you see I'm just using the object which I've created, predict, and on which data I'm going to predict? I'm going to predict it on X-test, because X-test is my new data, which are my features. And now for these features, I'll be predicting new labels and I will match it with X-test. तो हम लोग का जो नया डेटा है उसके ऊपर हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे और मैच करेंगे कि y-test और ypred कितना accurate है. We'll execute this. We'll check ypred first. These are all the values for ypred, and we'll check y-test. These are all the values for y-test. Okay. Now see, the first value 6 is it is predicted as 6, but actually the value is 5, right? Which means this is a misclassification. My algorithm was not able to classify this properly. So there will be lots of misclassifications which will be happening. 6 and 5. This is one case. Then again 5 and 6. This is another case. Then I'm just able to see this. If I write values, let me check here if this shows. Yeah, see. Again, I can see more values. This is 6. This is 7. Again, a misclassification. Actually, the value was 7, but my prediction was 6, which is a wrong prediction. How to decide which model is best for your data? Again, which model performs and which model gives you good accuracy, that is the best for your data. तो ये चीज समझ आ गई कि सुपरविजन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग कहाँ पे हो रहा है. एक तो मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल प्रेडिक्ट भी कर रहा है क्लासिफाई करके. सुपरविजन कहाँ पे है, जो मैंने अभी किया कि जो मेरे प्रेडिक्टेड वैल्यू है ypred में और y-test में जो मेरे एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है, कितने परसेंटेज वैल्यूज करेक्ट है, दैट इज गोइंग टू बी माय एक्यूरेसी. ओके. नाउ हाउ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल? फॉर दैट वी हैव क्लासिफिकेशन रिपोर्ट काइंड ऑफ थिंग, using which we will be checking the accuracy. See, accuracy के अंदर क्या मैंने भेजा, मेरे actual values भेजे and predicted values भेजे, एक report आएगा. This is the report. Just for now, concentrate on this value, which is accuracy, which means the value for accuracy is 0.57. If I convert it into percentage, it is only giving me 57% of accuracy.
which is very, very less, we can say. But again, 57% is not acceptable. We need accuracy near to 90-95. But for an example, we can say that, okay, we have used decision tree on this. The decision tree is not working that properly. It is giving us accuracy, but not accurately, which means every one observation out of the two is misclassified. Okay, it is close to 50, right? So अगर दो हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है मिसक्लासिफाई हो रहा है. So this is not a good accuracy. But again, I just wanted to explain you the concept and the building of classification models. This is how again Python provides you the simplicity. This is why Python is not easy, Python is very easy to implement. Okay, is this point clear? Now I will just wait here for 1 minute, and if you guys have any doubts, you guys can ask. Students, if you have any question, please you can write in the chat box or raise your hand so we can unmute you. So there is a question that when the data is large. Again, see, you can apply this algorithm when the data is large, but there are also there is one more algorithm called as random forest, which is a betterment of this algorithm. You can use that. Who set rules? Learning, system generated, or humans? It is system generated. Metrics like big data. What is the meaning of metrics? I don't understand. Okay, again, when it comes to big data, we have techniques to handle big data. Okay, and after it comes in the step of data transformation and data loading, which we learned yesterday. After that, when it comes to model phase, these are the models which you apply. Can we increase the accuracy of this model on that data? Yes, we can increase. There are techniques using which we can evaluate and using which we can check which features are not working properly. So we can eliminate that features and we can use. So how much accuracy can achieve? We can achieve till 100 as well. So again, see, when it comes to model building, if you have small data and you are using a very good model, like if you have only 100 data points or 1000 data points and you're using random forest, it can also give you accuracy of 100, which is 1. Instead of this 0.57, I'll get a value of 1 here. Again, value of 1 is not recommended. Value greater than 95 is also not recommended. Sir, is accuracy is the only metric on the basis of which model will be used in research? No, accuracy is not the only metric. Can you see your precision, recall, F1 score? Then there is confusion metric. Someone said true, false, positives, true, positives. All these metrics we can use and we can try to find out. This model test or predict, like we give some input in it auto generated rules and check the yes. We give data so that our tree can be created, the rules can be set. Again, the concept of pattern has been pattern matching in the sense it is just trying to understand the pattern, right? Then on the new data, we test how good our
pattern matching has or machine how good our machine has learned, that is checked on the new data. Student, if there is no more questions, so can we move forward? Type yes. If you are ready to move forward, type yes. So ma'am, we'll continue. Now we are going to study one more type here, which is time series analysis. And we are going to do a very good experiment, very interesting experiment. As I told you yesterday, I told you to take a look at Yahoo Finance. Sir, backpropagation supervised learning, kind of. Time series analysis. Okay. First, we'll understand what is the meaning of time series, and then we'll come to the word of analysis. Going back to the whiteboard. What is the meaning of series? We yesterday understood, right? What is the meaning of series? Series is random numbers. Okay, suppose I have 200, I have 400, I have 600, I have 120, I have 137. See, again, in points, in fraction, any number I can have. This is a series. When I map this series to a time factor, like at 10 a.m. in the morning, suppose instead of this series, I have some value like profit. Okay. If I say at 10 a.m. the profit is 200, at 11 a.m. the profit is 400, at 12 p.m. it is 600, at 1 o'clock, 1 p.m. it is 120, and at 2 p.m. it is 137. Okay. First, it was only an individual series. Now I have mapped that individual series to a time. Then this kind of thing, when you have, this is called as time series. The best example of time series is stocks data, like height on each, not kind of height on each, because you can say that when you were 1 year old, your height was this. When you are 2 years old, your height was this. When you are 10 years old, your height was this. That is a time series data, because with respect to your time, you're measuring your height. Okay. Now, what is the concept behind stocks? You guys might know this. Okay. For every minute, we have value of stock, price of stock. The price is changing, whether it is increasing, decreasing, fluctuating, continuously it is changing, updating. That is called as time series data. Now, when you download that data, right, you apply time series operations. There are lots of time series operations, lots of concepts in time series. But if you do that, and if you are trying to predict the stock for the next minute or for the next day, okay, suppose, just to take an example, you have prices of stock for today, like for 10 a.m., 11 a.m., 12 a.m., 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. I will take 9 o'clock here and 4 p.m. Okay, because from 9 to 4, I am taking hour-wise values. Okay, 9 to 4 stock market is opens at 9 o'clock, 9:30, and it closes around 3:34. Right, I am recording the values for today. The date for today is 14th of September. Okay, I have these values. Now I'll just put random values, like stock value was 180, it went to 185, then it came down to 178, then again it was 180 over here. Right, now after this 180, again it came to 177, 181, and again 179. These were the values which are recorded. What I am doing now, I am predicting it for 15th of September. What will be the 15th of September? What will be the value at 10 a.m.? Why not at 9 a.m.? Because most of the times the value which is at the closing 179, that is going to be the value at 9 o'clock. Okay, there are again, you should be having knowledge of finance wherein the value might change.
which is also a different concept. But today's close, what is the closing value of today is going to be the opening value of tomorrow. Okay. Now I'm trying to predict what is the value, what will be the value at 10 o'clock. Now, how can I predict this? Time series data, as this diagram, see, you have up and down, up and down, up and down of data, right? Suppose this time series data looks like this. Okay, now what I will do, I will find out, no, this data is not looking good. The diagram which I draw is not at all looking good. But in time series data, we usually have two things. First is a trend, and second one is seasonality. Now, what is the meaning of trend? There can be only two trends. Either the stock price is continuously increasing or the stock price is continuously decreasing. These are the two types of trends. What is the meaning of seasonality? Seasonality is basically after particular time interval, the stock price is again the same. Okay. After particular time, stock price is coming back to same. Again, it is increasing, coming back to same. Again, it is increasing, coming back to same. This is a kind of seasonality we can have in the stocks. Using now, अभी ये trend and seasonality, ये दोनों concept use करके, I can try to predict this next value. Okay, which is again not easy, but I can try to predict this next value. Coming back to the equation which can be used. Simple, again, whatever we studied in mathematics, linear equations. Next new value, I will write NV is equals to beta 0. I'm writing this, I will make you understand what is this, okay? Beta 1 xt plus beta 2 xt minus 1 plus beta 3 xt minus 2. Okay, now these are the values. Now, what is the significance of this? Now I want to predict the value of 10 o'clock. What values I can consider? I can consider the values of previous day. What was the value at 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, and 1 o'clock. I can take all the values, but for now we'll take only these 4 values. Okay. What is this value is going to tell me? See, 177, 181, and this. This can be the value, right? I'm taking just 4 values. You can take all the values, so you will get this trend, see, like this. Again, it is increasing, then it is. So this is kind of trend. So if I find out this, my value is going to increase. So I will tell that somewhere around 181. I'm just taking a random guess. Okay, it is not a calculated guess. I'm just taking a random guess and finding out that, okay, at 10 o'clock, the value might be 181. I'm not sure. Value might also go very high. Value might also go very low. I'm just predicting 181 using what I'm predicting. This beta 0, beta 1, which you can see, these are the weights, kind of weights which I'm giving. Okay, if weights in the sense, what is the importance of value at 4 o'clock? What is the importance of value at 3 o'clock? What is the importance of value of 2 o'clock? Based on that, this values of betas is going to get fixed. Okay. Or iske saath we will be having one error. A small error, we will say that this can be the fluctuation, or plus minus this is going to be the error. Like if I'm taking 181, I can give an error of 1, which is the either can be value 180 or 182. So that is a kind of error. Or while solving, just to compensate the output, we can add a component of error. Once I solve all these values, beta 0, beta 1, and I put the values, I will get the new value, which I suggested it as 181. Okay. When I do all this analysis on my data, which is a series mapped to a time, is called as time series data or time series analysis. Okay. Now, what are we going to do as a practical in time series data set? Okay. We are going to find out, just confirm whether you guys know what is meaning of a box plot, BOXPLOT, or I will explain you this. What is the meaning of box plot? If you guys know, just put yes. If no, I will explain. No.
Now what we will do, we will download one stock data, we'll create a histogram for that data. We studied yesterday what is histogram, we already know, right? And we'll create a box plot. Based on this two things, we will decide whether I should invest in that stock. First thing, whether I should invest. This is my first question. Second is whether that stock is probably going to give me profit or loss. Okay, we will analyze the nature of the stock and we'll try to understand whether the stock is going to give me profit or loss and whether I should invest or not. A very entry level example we will be evaluating, and we will try to understand and we will try to predict whether we have to invest and whether it is going to give me profit or loss. Okay. First, we'll go to Yahoo Finance. Yahoo Finance. And we'll download the data of, suppose, any company. We'll just take Reliance for now. Okay. Or ONGC, oil and gas. Oil and Natural Gas Corporation Limited. I'm taking the value. The current stock price is 125. And this is the, okay, if I take it for 6 months, this is how the stock is looking. It is increasing, decreasing. The lowest point was here, right? Which is on 12th of April, the value was 98. Now currently it is giving me profit of 124.95, which is the current value. Okay, I just minimize this. So this is how the graph looks like. Now here you have to note few concepts. Okay, here what is the opening value? Okay, previous close in the sense yesterday the last value of stock was 123.05. Today the stock opened at 123.30. Okay, as I said, the value of stock might change. Most of the time it is same, but might change, right? So here was the scenario when the value changed by 0.25 paisa. Right? Bid, ask, day range is again, this is the range which you give. 52-week range in the sense over the year, what is going to be the range? Okay, these are the values. Again, don't look at all these things. These are again advanced things. Just concentrate on previous close, open, and 52 weeks range. Okay, 52 weeks range is 64 to 128. Just remember this. Okay, I will write down here. Can anyone tell me what was the range? 64 to 120. 64 to 120. Okay. Now see, I have to download the historical data. I'll go to historical data section. I'll take past 6 months data. I'll write 6 months here. And now I'll click on apply. Okay, see, 14th of September, 13th September, August, July, and May, all these values till April, I am getting the data. Now I will download this data. Click on download. The download of the data will start. Okay. Now I will open this data and I will show you. Is this data visible? Excel file. Now see, I have date, which means I have a time component, and these are all the values: open, high, low, close, adjusted, close, and volume. Okay. For now, okay, I will be only focusing on this close column. Okay, will not focus on open, high, low, adjusted, low, and volume, because I will tell you the reason. For now, I will just delete all this. And we'll just make use of this column. Now, whenever we analyze stock, we always analyze the return. What is the return my stock is going to give? Whether it is the positive return, whether it is negative return, positive in the sense profit, negative in the sense loss, right? So I'll calculate return first. How to calculate return now? To calculate return, for the first day, the return is going to be 0. Because why? I will tell you. See, how is return calculated? The return of 15th of September, what is the return on 15th with respect to 14th? How can I calculate the return? Calculate return is basically the fraction of the values, which is this minus this divided by the previous value. So I will get the percentage return of values.
if I do subtract the today's value with yesterday's value, and then if I divide the value with yesterday's value, I will get the return, right? I'll press enter. Now I'll just drag this down till the end. Whichever values I have, I'll just drag it till here. Okay. So these were the returns. Somewhere I have negative returns, somewhere I have positive returns. Just let me check. I think I have 9 values now. Okay. So these are the values of return. Okay. I am getting some value error here. So I'll just delete these 2 values. Okay. You will have to check your data again, okay? Because see, again, I got some NaN values, right? So there were no values, so reference was missing. So that is why you should always check your data whether it is proper or not. Okay. Now what I will do, just delete this first. Okay, I will keep it as 0. Save. Now this data ongc.nc, we will go and plot a histogram for this, and we'll go and plot a box plot for this. Okay. What I will do, see. My algorithm, and I will write your timesheets. Now I will import the data. I'll write td time data is equals to td dot read underscore csv. Now I have to copy the path. So what I will do, I'll just paste. Okay, I will copy this as path. Now here I am using absolute path because I saved my data on D drive or on desktop. Okay, so that's why I'm copying this path. I put R. If I check my TD, this is the TD which I'm having. Now, yesterday we know that for creating charts, I am using matplotlib. So I'll write from matplotlib dot pyplot as plt. So I don't have to write from, I have to write import. Import matplotlib.pyplot as plt. Now I'll write plt.hist. First I will create histogram. So I'll write td of return. After this I'll write plt.show so that it will show me a histogram. This is how a histogram looks like. Now I will create a box plot. I'll write plt.boxplot. Okay. These 2 plots you can use and you can analyze the stock. Okay, I'll tell you how. First, let me create this. Right, plt.show. This is a box plot. Okay, I'll quickly. I will not explain you histogram first. First, you'll understand what is a box plot because many of you don't know what is a box plot. Now, what is the meaning of a box plot? If you look at this box plot, I have a square-like structure in between, right? And now I have some lines. Can you see these lines? These are some lines. There is orange color lines. There are some rings, right? So how to understand all this? We'll first understand that. Okay. Yeah. See. Now this orange color line, this is called as median value or median, or I can also say that this is 50th percentile. This line over here, this is the 25th percentile value. This is the 75th percentile value. Okay. From this point till this point, maximum of my data is going to lie. Okay, this is called as one whisker. This is called as whisker. So the word is VISCOUR. VIS whisker. Okay. What are these ring values? Any value below the whisker and above the whisker is called as outlier. Okay. Now, what is the meaning of outlier? I'll just show you this in Excel quickly. Where is B1? What is the meaning of outlier?
So I have values in 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the values which I have. Okay. And somewhere here I have value as 2000. This 2000 is an outlier because my range of value is from 1 to 9 and 2000 is extremely out of range. Even if I take 200, 200 is all extremely out of range, right? So if I create a box plot of this values, this 200 is going to be shown by this ring or this small circle. So this is the meaning of outlier. Outlier means any extreme values. Okay. Errors, we cannot say errors. We can say extreme values. The good word for it is extreme values. Okay. Now, can I, as I can see, my median is somewhere around 0. So if I want to find out what is the exact value of my median, I'll write TD of return, not describe. So describe is going to give me all the mathematical. See, I have seen the mean. Again, minimum value is there, standard deviation is there, maximum value is there. And as I explained, 25%, 50%, and 75%, these values are there. What is the mean? Mean is around 0. I can say close to 0, 0.002, which means, what is the meaning of average? Most of the times, or the average value, most of the times, I cannot say most of the times. If I am trying to predict, if I consider only average, I can get the average return as 0.02, which is very, very less. Okay. 50% is I can get median return, which is different from average. See, 0.24 and 0.002431 and 0.002400. So this 31 is also a big thing. If you are what we can say, if you are dealing in crores, this is also a big thing. Okay. Now, maximum is 0.08. So maximum return you can get of 8%, which is 0.08. Minimum is you can go till minus 9%. Like you can go in loss of around 9%, 0.09. Now looking at these values and this box plot and this. Now what I will do, I'll just copy paste this quickly in our whiteboard so that we understand how to interpret a histogram and how to interpret a box plot. We'll take a look at that. And just paste it here, and then this box plot again I paste it. Okay, so now this box plot and histogram, I have brought it over here. Now what you have to do, or how you have to analyze, I'll tell you this. See, you just have to, on 0 mark, you have to draw a line. I'm not using it. I have to draw a line here. See, okay. Now what I have to check, majority of the times, or what is the maximum times I am getting return. So if I add these values on the right side, these are positive returns, right? And if I add values on the left side, these are negative returns. Okay, I can say, just looking at, just a random guess I'm taking and looking at this. Okay, I can say that majority of the times or maximum times I'm getting value close to positive side or positive returns, I can say. Okay, I am getting negative returns, but if again, next thing is, if I am getting a positive return can go up to the value is 0.7, which is 7%. Correct. When it goes to negative, extreme is minus 10%, right? So I can say the volatility of this stock is a bit more, because again, if I take a look at this box plot, this value is not that big, but when it comes to stocks, even a return of 0.01 is valuable. Okay. So I can say if I'm getting positive values, then the stock is maximum going to 7% profit. And if I'm getting negative values, the maximum it is going to 10%. So I can say that even though maximum number of times, ज़्यादातर मेरे को positive returns मिल रहे हैं, stock is giving me positive returns. But if the trend of the stock starts falling, it can go maximum to 10%. Okay, if you are a person who is patient and who knows who can keep his stocks for around 1 year, 1.5 years, I can suggest him to pick up this stock. But a person who don't want to wait
and he works on, he gambles or he plays on a daily basis. Like I will invest in the morning, after 1 day, after 2 days, I'm going to sell it. For that specific person, if the stock falls, it is not going to be a good thing, right? So again, whether to invest or not based on this values, you can see. Now looking at this, if I join this and I draw it like this, right, I can say that it is a kind of positive skewness. If you guys know what is skewness, skewness is of two types. It is either positive or negative. If it is on the right side, it is positive. If it is on the left side, it is negative skewness. When it is positive skewness, we can have, see, on -10, we have some values, in -7, we have some value. The proportion of these two values is, or the frequency of these two values is more than this value, which means I'm getting negative returns sometimes, but with respect to positive return, highest positive returns, my negative returns is more. Okay, so I can say this stock is a bit volatile. If you want, you can invest. Again, if I check the values of the stock in year before this, maximum, what was the range? What was the range we noted? 64 to 128, right? Which is around only 60 rupees. So to take so much risk of negativity and to deal with it, we can say that, okay, if you are investing 100 rupees and you're losing 5 rupees, you can compensate that. Like if you have taken one more good stock, you can always get that rupees back, 5 rupees back. But if you are working in crores, okay, if you are invested 2 crores and you have a loss of around 50 to 60 lakhs, it might take you some more time or even a year to come back to equilibrium of positive side, right? So at that point of time, we won't suggest this. This was a stock with very less pricing, or we can say comparatively less. I cannot say less, comparatively less pricing, so we can invest. But if there is one stock whose price is around 75,000 per stock, or for one stock, okay, this stock 64 rupees is one stock, and usually we take lots of stocks, like you can take 50 stocks, 60 stocks, 10 stocks, like this. So 75 into 50, if we do this, that many number, whichever the value is going to come here, okay, that many investment you have done, that much money you have put in. So suppose you are putting a value of 2 lakhs, okay, and you are getting so you are getting a loss of around 20,000. This is not a good thing, right? So this is how you have to analyze. You have to check the histograms and box plots. This is how visualization has been used. Importance of visualization in this. Please explain RMSC, MSC, MAP. See, RMSC, MSC, MAP, again, mean square error. What is the meaning of mean square error? Mean square error is, I will tell you. MSE is, if I see, again, these are very deep concepts. If I sit, I will have just to explain RMSC, MSC, and MAP. I can take 2-hour sessions just to explain that 3 concepts. Okay, just to give you a short overview, what is MSC? What is the formula of MSC? Can anyone tell me? Yes, MSC is basically, I'm waiting. It is the average of predicted value minus actual value, the whole square. Mean square error. Root mean square error is basically you're taking the root of this. MAP is mean absolute percentage error. Again, there might be a formula for MAP as well, similar to this. So mean square error is a metric using which you are trying to find out how far you are from your predictions. Like if your actual value is 2, you are predicting it as 8. 36 is going to the value which you are getting. Okay, 36 divided by, suppose you have 10 values. I'm just taking okay, 10. So 3.6 is going to be the MSE value, which is very, very poor, because see, actual value you wanted the value close to 2 or at least 2. You are getting the value as 8. The difference is very big, right? So as low your mean square value is, mean square error, okay, mean square error value is, that much close you are, or that much accurate your model is. Now see, when it comes to RMSC, MSC, MAP, these are used on regression models. On classification, we cannot use this, because in classification,
we cannot find out like the class is 2, I'm predicting it as 8, and let's find out MSE. I can find out what are the misclassifications, which we did in decision tree here. If the actual is different and my prediction is different, it is a misclassification. That's it. Now, to find out the accuracy, I'm just calculating how many number of correct matches are there and how many wrong matches are there, and I'm taking the percentage of this. That's it. So this is how we can say time series thing works, and there are lots of concepts again. There is random walk is there, then there is autoregressive model, moving average, exponential moving average. Lots of concepts are there which you can explore and learn. This was just a simple example using visualization. I just wanted to show the importance of visualization in small things, or in even taking big decisions. So this is how time series works. Clustering, then decision tree, time series. These were the 3 basic features of machine learning. These are not features of machine learning. Now the next is computer vision. This is not features of machine learning, but you should be knowing that what is the next step after machine learning. Okay, it is that there are 2 things. First is computer vision and natural language processing. What is computer vision? Computer vision is we are trying to mimic human eye. What is the meaning of human eye? Human eye is basically whatever we see, how our brain processes it, right? How our brain understands, how our brain captures everything. We are trying to mimic in human or computer vision. So if you take the example of automated cars, computer vision is the core concept behind it, which has been used. If the camera is not capturing properly, if captured image is not analyzed properly, then how can, okay, there might be accidents which are happening, right? So to make things work properly, with computer vision or specific to visual data, computer vision is being used. Okay. Before this, there is again a concept of deep learning or deep neural networks, which was introduced by Rajesh sir yesterday. That is used. Yes, Tesla is using these concepts. Not only computer vision. There are lots of concepts like sensor data has been analyzed. You have proximity sensors. Then there are again different types of sensors, like sound sensor is there, mic is there, earphones is there, camera is there. So in computer vision, we specifically talk about camera as a sensor. So whatever images we are capturing, whatever videos we are capturing, all those captured things, how we can analyze, that thing comes under computer vision. In computer vision, the concept of convolution neural networks or artificial neural networks is used extensively. Okay, to achieve the field of computer vision, convolution neural net is must. Okay, automated cars is just an example of computer vision. See, computer vision is an interdisciplinary scientific field that deals with how computers can gain high-level understanding from digital images and videos. From the perspective of engineering, it seeks to understand an automated task that the human visual systems can do. Okay, just to give you a short example of this, again, how concepts of basic mathematics have been applied here. An image, as I explained, colors are denoted from the range of 0 to 255, right? So if I take an image like this, or else we'll take this histogram image. This histogram image, if I'm trying to analyze this image, okay, what are the color values I can see? Here, see, here the value is 255. This green color, this value is close to 220. This orange color, this value is going to be close to 150, we'll see. Okay. Now, when I convert this image, okay, when I convert this image into numbers, this image can be converted into matrix. Now, what is the concept of matrix which is used here? We know that image is created with the help of pixels, right? Now, when you open any image, suppose I open any image and I see the details, there is a size of the image which is there, like 1000 by 1000 by 800, right? When I can say if the image size is 1000 by 800, 1000 is width, this is height, right? Which means likewise 1000 pixels are there, likewise 800 pixels are there. Now,
if I have 1000 by 800 as the size, 1000 into 800, whatever is the value, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8 lakhs. 8 lakh pixels, 1, 2, 3, 4, 5, means 8 lakh, yeah. 8 lakh pixels will be there in my image. Okay, each pixel will be having value between 0 to 255. Okay, and I can save these values in the form of matrix. My size of the matrix will be again 1000 into 800, and each node or each element like 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 0, all these points will be having each pixel value, like value at this pixel is going to come over here. The value at this specific side is going to come over here for the image. Okay, and now once my image data has been converted into numbers, and as I know, matrix operations can be performed on machine learning algorithms, can perform numerical operations only, right? So I've converted my image data into numbers using matrix, right? So this is how computer vision as a introductory field is been introduced, and how images are converted into numbers. Now, once you have received these numbers, you can again start applying whatever knowledge you have regarding machine learning. Okay. Now, how is concept of features and labels is implemented here? See, I'll tell you. This values of pixels, all these values are features. Okay, and if this picture is of a car, this is the label. Like this, the car is not denoted. Okay, the picture, whatever picture contains, if it is of a car, I am going to name this picture. This picture is going to be car.jpg. Okay, so this car, this is going to be the label, and the features are going to be the pixel values. Okay, now just remember, just focus on this. Okay, if I have an image of a car and I have an image of a face, the image of a car and image of a face, can you, we can identify it looking at the images. We can directly identify that, okay, it is a car, it is an image. But if you want to look, if you want to try to understand this from a mathematical perspective, if you go to the pixel level, for each and every pixel, the values will be different, like face color and a car color is different. Okay, now if you say that, okay, what I will do, I will color my car with the color of my face, whatever is my body color, I'll color the car with that, and I'll take the image. So the pixel value are going to be same. But again, what is the important thing here? Important thing, why these are called as features. Car shape is something like this. I'm drawing it and face is somewhere in the middle. Okay, now looking at the position of the pixel. Okay, see, for a car, we have pixels here and here as well, right? For a face, we have pixels here, but we don't have pixels here, right? So all these things are going to kept in mind, and the features are going to be learned. Okay, so this is car, this is face, based on the position of the image, where that specific object is in the image, what is the color combination, what are the things. Based on all this, the machine learning understands the features and try to associate it with the label and try to learn itself. Okay, for that we make use of convolution neural nets. In convolution neural nets, we can directly pass this features or this metric and we can apply. Now when it comes to image, we have three components of an image: red, green and blue component, right? Whenever we talk about a pixel is having three components: red, green and blue. Okay, so there are techniques using which you can only extract the red component, we can only extract the green component. Okay, there are again techniques which using which we can check what is the edge. Okay, if we take of the example of a face, our face has a particular shape, right? And after that we have background. So wherever face ends, that is the edge, and after that whatever is there, that the remaining part is the background, right? So using the edge detection techniques, we can also detect face and we can also detect backgrounds. So all these are advanced concepts in computer vision. We can try to recognize whether it is a signal, we can try to recognize whether the signal is showing red color or whether it is showing green color, whether the car has to stop or car has to go. All this programming we can do using
programming language. For that, we can use Python. Okay, because Python is very easy to implement. Okay, sometimes it might get hard. Now, this was related to computer vision. Next is natural language processing. Natural language processing is, yesterday we were trying to take a look at Wikipedia site, right? If I go again, just to show you once more, see, I'll just take this example of a site and I go to inspect it. Now, this links, if I want to find out this links, or if I'm interested in some data like numbers or times, how can I analyze this data? I already explained this yesterday, that using vector operations, I can convert this value into vectors. How these values are converted into vectors, again, that is a very complex concept to understand. But using natural language processing, we know that chatbots, Google Assistant, Siri, Alexa, or whichever Google Assistants we have, you can also create your Google Assistant or a virtual assistant of your own. Okay, you can just program. Or now how virtual assistants are been programmed. Okay, so what has been done? Predefined question set is been defined, and predefined answers to that question set has been defined. Okay, if you get a question similar to this, you have to give this answer, right? Someone says hi, virtual assistant is going to say hi, good morning. If he says show me where is India, it is going to show you map of the world and it is going to locate India over there. Okay, what is assistant doing? Assistant is analyzing the words which you have spoken. It is trying to understand the meaning, and then it is trying to give you relevant results. Okay, so this is how what we can say natural language processing has been used. Okay, these were the components of machine learning specifically, which is, first one was unsupervised learning, supervised learning, time series, computer vision, and natural language processing. Next is, what are the real life applications of machine learning? Semantic analysis, again, we are trying to understand what is the meaning or what are the valuable words in that specific sentence. Okay, what are the real life applications of machine learning now? Now, I could have already explained you this, what are the applications, and then we can understand. But now, once you have understood, now जब आपको ये चीज पता है कि concepts क्या है, पूरा field क्या है, तो आप ये चीज में सोच पाओगे कि अभी ये जो application है, इसमें ये field कैसे apply होगा, ठीक है? Now, understanding the applications is always going to give you more benefit. Now see, if I talk about artificial intelligence, again, you are creating a robot kind of thing or automated car kind of thing, right? You are trying to mimic, you are trying to recognize people, you are trying to recognize a road or recognize a signal, whether it is red, green, or recognize a footpath or recognizing a walking person. Artificial intelligence using either using the sound data or either using language data, either using images, it is going to analyze and it is going to act in the world. Okay, next is finance. Yesterday also we studied about finance, that if you want to give loan to a person, you can check the features or the history of that person and you will try to understand whether you should give the loan or not. Okay, for medical, we had a good example of medical, right, wherein we tried to understand if we are giving vaccines to person, okay, how domain expertise is important, right? So there we have the concept of medical. Okay, social media, again, how is social media impacting, right? When you go and search YouTube, we can capture photo, AI at show age in mobile. Yes, like AI show, I'm not able to understand. Can you please retype this? Yes. How is social media impacting? Okay, whatever videos you can see, can you see if you use YouTube, suppose you are searching video related to Python programming, and if you select a particular channel and you start watching his playlist, okay, what will YouTube do? YouTube will smartly tell that, okay, if you are watching a particular channel and you are watching Python, which means you have interest in learning programming, so he will recommend you, okay, if you are learning Python, you can also check and learn Java. These are the, or you can also learn different applications wherein applications of Python has been implemented, or you can go and learn machine learning. So YouTube is going to recommend you that. How is that done? That is, again, YouTube is trying to understand whatever you're searching, whatever you're looking for,
and the algorithm is created using which it is trying to correctly recommend based on your interest of videos. Okay, if you go and watch a dance video, it is going to recommend you all the videos related to dance and music. If you go and watch a video recording regarding a recipe, it is going to show you a video recording regarding recipes or different food or different things you can create in food, right? How are product recommendation done? Okay, a good example of this is Amazon or Flipkart site. If you guys use Amazon or Flipkart पे क्या होता है कि if you are searching for a laptop, it also shows you people who bought laptop have bought these headphones, right? इसने ये कीबोर्ड भी buy किया, फिर इसके साथ माउस buy किया, or it shows you combination of laptop, keyboard and mouse with a discount price. If you take 3 of them together, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, 10%, 5%, करेक्ट? या फिर अगर आप समझो डेल कंपनी का लैपटॉप सर्च कर रहे हो, तो वो डेल रिलेटेड ही आपको अच्छे लैपटॉप्स बताएगा. या फिर आपको अगर डेल में से आपने देखा कि उसने देखा कि ओके डेल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, सो यू विल अंडरस्टैंड ओके डेल लैपटॉप्स, ही विल सजेस्ट यू लैपटॉप्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. सो दैट इज हाउ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इज बीन डन. सो दीज आर द 5 mentioned real life applications of machine learning. But if you are thinking from a very small scale to a very large scale, आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही है, everything is machine learning, because as the definition states, machine is learning. Okay, हम लोग जब भी बच्चे होते हैं छोटे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं. वैसे ही हम लोग मशीन को सिखा रहे हैं. तो तभी हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या कि एज अ चाइल्ड अगर आपके सामने मैथमेटिकल टेबल्स हो गए, ठीक है, अगर आपको, तभी हम लोग पेरेंट्स आके ऐसे नहीं बोलते ना कि टेबल्स तुम्हारे बस की तो बात ही नहीं है, पढ़ो ही मत. ऐसा नहीं होता है. ऐसा होता है कि तुम पढ़ो, तुम समझो, तुम रिवाइज करो, तो अभी जाके तुम्हारे दिमाग में क्लियर होंगे कंसेप्ट, या फिर तुमको याद रहेगा. तो कोई भी छोटी से छोटी चीज, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज योर फादर, it is also a kind of machine learning, because you have intelligence of recognizing him as a father or him as a human. Machine, if you train a machine is also going to recognize him. So that is also a kind of machine learning. Okay, whatever you think of in your mind can be implemented using machine learning. What are the trends now? Okay, we have understood the working of this field. We have understood how this field works, why this field is emerging, why this field is important to learn, or why you should be interested in this field. I'm not asking that everyone should be interested. Okay, it is up to your choice. But why a person gets interested in this field? After knowing all these things, I made it simple to understand each and every concept. Now, what are the trends? Like, you can read these trends out, or if I read it for you, that companies are searching for talents who are trying to learn every day in this field and trying to implement the knowledge. Okay, learning only is not sufficient. You should be able to implement. अगर आपको काम करने आता है तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नहीं तो आपका सैचुरेशन लेवल आ जाता है. कि हम लोग बोलते हैं ना कि एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाते हैं लोग. अगर मेरे को इतना आता है, इसके बाद नहीं, अभी मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, मैं इसमें ही कुछ करूंगा. ऐसे अगर करोगे तो सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा ये फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड कंटिन्यूअसली डेवलप हो रहा है. In market by 2025, the revenue of this field is going to increase. जैसे कि अभी देखो हर एक चीज towards automation हम लोग बढ़ रहे हैं, राइट? तो ऑटोमेशन कैसे होगा? जब भी हम लोग मशीन्स को ही ट्रेन करेंगे खुद से करना, that is a kind of automation, राइट? तो मशीन लर्निंग इसके कारण बहुत इसमें है. डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, अगेन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ने पहले ही देखा कि हम लोग वैल्यूएबल डिसीजंस ले पा रहे हैं. जैसे फाइनेंस रिलेटेड हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे, मेडिकल रिलेटेड एग्जांपल्स देखे, बड़े बड़े जो डिसीजंस है, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम लोग कर पा रहे हैं, राइट? तो इसके कारण ये फील्ड बहुत डिमांड में है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज, ये फील्ड आती बहुत लोगों को है, बट काम करने बहुत कम लोगों को आता है. इसके कारण जॉब्स है, बट people are not able to work, or people are not able to work satisfactorily in this field because कंसेप्ट नॉलेज नहीं हो पाता है. जैसे मैंने फर्स्ट डे पे ही बोला कि मशीन लर्निंग अगर हम लोग आके पढ़ रहे हैं, 4 एल्गोरिथम्स 10 एल्गोरिथम्स पढ़ लिए, दैट इज नॉट मशीन लर्निंग. यू कैन राइट कोड. सी, इफ आई शो, एनीवन कैन कम एंड राइट कोड लाइक दिस व्हिच आई रोट, बट देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु कैन गो ड्रॉ इट ऑन एन व्हाइट बोर्ड, and there are only few people who can go and explain that concept in Excel. Okay, as we solved k-means here, this is again a simple concept of k-means, but people only know what is k-means, how this is done, but when it comes to implementation, okay, implementation, हाँ हमें तो कोड आता है, we can do. यही प्रॉब्लम है. अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता है, आप एल्गोरिथम तो बना लोगे,
बट डायनेमिक चीजें नहीं बना पाओगे। एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, कौन सा एल्गोरिदम कहाँ पे यूज करना है, ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई कंसेप्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फील्ड में, ना कि मशीन लर्निंग, हर एक फील्ड में कंसेप्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगेन ये वाई पाइथन, ये साइड एक्चुअली बहुत नीचे आ गया, बट पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि पाइथन क्यों, क्योंकि वो बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है एंड एवरीथिंग। आफ्टर this is the thank you slide. Thank you for giving me the opportunity to explain you guys the concepts in depth of algorithms, what this field is, introduction. Some might be having an introduction to this field, or some might be working in this field and know more about this field. So thank you for being with me and understanding this field with me. If you guys have any questions, you guys can ask. Students, if you have any question or any doubt, or if you want to unmute yourself, तो kindly raise your hand or write in chat box. जो भी क्वेश्चन है आपका, आप लिख नहीं पाते, नॉट कंफर्टेबल, तो हम आपको अनम्यूट भी करवा देंगे, और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. Sir, there is a question from Sheetal ki whether the CNN works for every kind of data and what are the benefits of machine learning? Okay. Yes. CNN usually works for good on image data. Okay. If you have images and you are trying to convert it, CNN can work. What is the benefit of machine learning? I guess, okay. Pankaj, see, whatever you have learned till now, whatever you can think of, that is the benefit of machine learning, right? If you are able to try, if you are able to solve real life problems in virtual world, and you are trying to achieve, आपको अगर good results मिल रहे हैं, that are the benefits. Sir, in this session, decision tree gave 50 accuracy. Please also increase the accuracy. It gave actually 57. I can give you suggestion that you can try random forest algorithm for that, and you can get a good accuracy. Now, this, yes. Any other doubts? Applications of AI in medical field. There are lots of applications, from detecting a cancer to detecting whether a person is having cough or not, or how can what is the health of the person, and what we can say, what remedies we can give to a person. Everything you can do using machine learning. You can just train a machine for all this. Any more questions? I just wanted to tell something regarding the courses thing. Like, if Yes, you guys sir, are, yeah, if you guys are interested in learning this field, and if you want to understand more about this field, you can always contact me or the Harish sir for this. I will just ping the contact here. You can ask about the courses, okay, and you can try to learn. I'll just show you the page of Vice Potatoes. This site is basically under maintenance, but we try to explain and make people understand what is Python, blockchain, Angular. You will be having sessions of Python from blockchain from tomorrow. Node.js, AngularJS, React.js, these JavaScript, these are the different courses. We are also starting with software testing as a field. If any one of you are interested in this field, they can come and learn. Okay. Also, yeah. So Mr. Yash, as you guys know, will be taking blockchain for you. He's also a fantastic teacher. And you guys, if you want, I have just pinged the contact in the chat box. You guys can go and you guys can check. Okay. Thank you, ma'am. So this was the session from my side. Yeah, thank you so much, sir, for such a wonderful session. And I think you trained the students, taking all the queries and your practical implementations of the code, the aspects you taught to students, and through the examples and all that with diagrams and the numeric examples all. So thank you so much for such a wonderful session and presentation, and in a very comprehensive manner.
So for a formal vote of thanks and the summarization of this session, I would like to call our research scholar, Mr. Umesh. Over to you. Thank you, Huda ma'am, for letting me to done this Thanksgiving to sir. And thank you, Abhishek Gule sir, for presenting today's webinar consisting of features of machine learning, what are the algorithms used in machine learning, and concepts of unsupervised learning, which contains no labels, and the clustering which is used, a method which is used in unsupervised learning. Also the algo which was k-means clustering and how it is used. Also the Euclidean distance which we can calculate in this clustering process. Also the supervised learning and its classifications, that it is classified in class and labels and all these things. And also the most important decision tree which we can create on the current input or the data which we can get from internet. Also the time series, the trends and seasonalities, histogram and box plot, computer vision, natural language processing, real life application of MLs and the trends, and also the importance of ML in our day-to-day lives. So thank you, sir. Thank you all the participants for participating in it and putting all your concentrations and valuable time in the webinar. So thank you so much. And had to, ma'am. Thank you, Umesh. And again, I am very thankful on the behalf of the CSC department for organizing such a wonderful session, and especially to Abhishek sir for this lovely gathering. And I think it will be a better team in future also. So we even wish you all the best with a lot of thanks and best wishes, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Students, you have the contact number of Mr. Abhishek Guleji. If you have any doubt or want to contact with your queries in future or for any training, you can contact him. Actually, the number is of Harish sir, so you can contact him. Okay, sir. Thank you, sir. Abhishek ji, you have any query? No, ma'am, no Can we queries end from up me. this meeting? Yes, ma'am. Thank you, ma'am.